Good morning, everyone. Am I audible? Thank you. Thank you, Professor Shukla, Rector of BHU, Professor Susma ji, Professor Swai, and the faculties, members, and the audience present as BHU. My colleague Kesang, Jayesh Patel, D.K. Chaturvedi ji, and other colleagues from NCTE, and the experts who have joined this session virtually from different locations. I extend a very warm wish to all of you on the occasion of this consultation. It's actually sad that we could not join you physically. All of us wanted to be there with all of you at BHU. Given the history and the heritage of BHU, given the rich academic legacy of BHU, we thought that it would be most appropriate to organize the session at Banaras Hindu University. But unfortunately, because of the COVID session, we are having to join this session virtually. In fact, I am still recovering from COVID, but fortunately, this COVID wave has been much milder than the Delta wave that we faced in April, May last year, and hopefully this keeps this way only. As far as today's session is concerned, the National Professional Standard of Teachers is an initiative under the National Education Policy, and this initiative has been necessitated on account of the fact that teacher is one of the most crucial element in ensuring quality of education. So teacher preparation has to be both at the pre-service level and also at the in-service level. And at the in-service level, we didn't have a very well-structured mechanism, a well-structured instrument to assess the professional competence of teachers at different levels of their seniority. Right now, if you go to the states, different states have different kinds of cadres. The cadre management is quite convoluted, and on account of that, most of the state education departments are beset with litigation. If you go to most of the states, the primary school teachers end up getting the least salary, whereas in the class 10th, 11th, 12th, the salary structure is a little higher. But as we understand the psychological development of the kids, we have also come to realize that handling young age kids probably is more challenging than handling adolescent kids. So from that point of view, there needs to be a rationalization in the way we treat the teachers and the way we manage their cadres. In many Scandinavian states, in many Scandinavian countries, the primary school teachers, the early childhood care center teachers actually end up getting much higher salary or maybe salary at par with those teachers who teach students at class 11, 12th level. So we also need to have a relook at the way we manage our cadres. And from that point of view, we also need to create instruments by which we not only evaluate the professional competence of teachers at different levels, but also provide them the pathway to go from one level to another. So NPST is an attempt to divide teachers at 4 levels: beginner teachers, proficient teachers, expert teachers, and lead teachers. And there are domains and subdomains which actually try to provide descriptors for the different levels at which they should be at their present role, and how do they transit from one level to another is the next step. So we are in the process of identifying a platform. We are in the process of creating a platform wherein the teachers would not only be able to self-assess themselves,
but also an institutional mechanism will be created where accrediting bodies, including our SCRTs, including diets, will also be able to evaluate the professional competence of teachers and then provide them the modules by which they can increase their professional competence. Similarly, National Mentorship Mission is another initiative which aims at leveraging the rich repository of knowledge, rich expertise which is lying around. In our country, most of the people retire at the age of 60, but physically or mentally, they do not become inactive at the age of 60. So there are many people in our country who would be able to value add, who would be able to help our teachers, our school leaders, our principals in many ways, including providing academic mentorship and leadership related mentorship. So National Mentorship Mission is again a platform to identify potential mentors and mentees at the school level, and this platform will provide them with an opportunity to join hands and do value addition to the schools. The idea behind holding this consultation workshop is to get inputs from all of you, especially people like you who have been involved with education since ages, since a long time, and get that input which will help us to fine tune, which will help us to add value to the draft documents which are there in the NCTE website. So I hope today's deliberation will help us in fine tuning our documents and will get practical inputs from all of you for both national professional standards as well as national mentorship mission. With this, I thank BHU for organizing this, and I'm looking forward to a very enriching session ahead. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable thoughts and suggestions with us. Ladies and gentlemen, I am absolutely delighted to request our Honorable Rector, renowned surgeon in the field of gastroenterology and surgical oncology. Apart from this, he is a very good administrator, academician, and a very good renowned medical specialist. So, I request Professor Sukla sir to address the gathering. Thank you. I am delighted to be here with all of you today in this open house discussion on National Education Policy 2020, being jointly organized by Banaras Hindu University and the National Council for Teachers Education. The open house discussion will have special emphasis on national professional standards of teachers and national mission for mentoring. First of all, I'd like to extend a warm welcome to Sri Santosh Kumar Sarangi ji, Chairperson, National Council for Teachers Education, and Ms. Keshang Sherpa, Member Secretary, National Council for Teachers Education. I also welcome the eminent speakers, esteemed guests in today's discussion. I express my sincere gratitude towards Professor S.K. Swain, Dean Faculty of Education, Professor Susma Gildial, Department of Physical Education, and Program Coordinator of the Open House Discussion, and Professor Raju Vyas, Head Department of Physical Education, Banaras Hindu University. As you all know, the National Education Policy 2020, it has been approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020. It outlines the vision of new education system of India. The National Education Policy 2020 is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system by 2040. National Education Policy 2020 envisages an India-centric education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society
by providing high quality education to all. Actually, if this policy is implemented in word and spirit, I think the aim of this policy is to achieve the old glory of this our country. That is, we have to be the world leader as far as education is concerned, what we call the Vishwa Guru. Attracting the best talent to the teaching profession is the need of the hour. There is need to determine the attribute of the teachers at different levels of career pathway. Thus, there was need of a policy which could address the said requirements for the bright future of our young generation. The National Education Policy has come up with a blueprint to fulfill this requirement in the form of National Professional Standards for Teachers. This policy envisages equitable access to the highest quality education for all learners, thus ensures quality in teacher education. The NPST focuses on preparations, practice, and performance improvement of all teachers. It enshrines the opportunity that all students at all levels of school education are taught by passionate, motivated, highly qualified, professionally trained, and well equipped teachers. Another important aspect of building a knowledge society is the mentoring. It is one of the fundamental requirements of training the teachers and professionals. Mentoring is a process of informal transmission of knowledge, social capital, and the psychosocial support perceived by the recipient as relevant to work, career, or professional development. The National Education Policy 2020 has come up with a component of mentoring called National Mission for Mentoring. This mission involves creation of large pool of outstanding senior or retired professionals willing to provide mentoring to the ones seeking guidance and help. These potential mentors, regardless of the age or position of the mentor and mentee, will contribute towards realizing 21st century development goals of our nation. The NMM underlines the importance of the short and long-term mentoring, professional support to teachers and teacher educators. It brings an opportunity to leverage cross-learning among different individuals, leading to their continuous professional development. I believe that a large participation, including academicians, educational administrators, teacher educators from various parts of the country, are participating in this open house discussion. I expect that deliberations and discussions of this event will help in sketching a roadmap for implementation of NEP 2020 in general and National Professional Standards of Teachers and National Mission for Mentoring in particular. With these words, I would like to congratulate the entire team involved in the organization of this open house discussion on National Education Policy 2020 and extend my best wishes for the grand success. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. To embellish, to enhance, to enlighten, and to enrich the occasion, we are truly honored with your presence, sir. Our guest of honor, Madam Kesang Yangzom Sherpa, joined Indian Revenue Services Income Tax in 1995. She is holding the rank of Commissioner of Income Tax. In her career span of 26 years, she has mainly dealt with tax administration of corporate and non-corporate cases. She has undergone the 58th course in National Security and Strategic Studies from the National Defense College, New Delhi, and has also completed her MPhil in Strategic and Defense Studies. Currently, she is on deputation to Ministry of Education as Member Secretary, NCTE, for past 1 year. Many remarkable developments in the teacher education sector have been done by NCTE in this short tenure of hers. Now I request Madam Member Secretary, NCTE, to address the audience. Thank you, Shri Santosh Sarandi, Chairperson, NCTE, Professor S.K. Swan, Dean, Faculty of Education, BHU, Professor D.K. Shukla, Rector, BHU, Professor Shushma Giliyal, Program Coordinator, Professor Rajiv Vyas, HOD, Physical Education, all the academicians, the teachers, the professors, experts, the students, and my own team from NCTE who are present in this open house, offline and online. A very good morning. As my chairperson has already stated, we were very keen to attend this open house session in person, in physical mode in BHU, but unfortunately due to this pandemic and we were not able to attend, so we are joining you online.
Thank you to BHU and the Vice Chancellor, Sudhir K. Jain Ji, for partnering with NCTE in this open house for NPST and NMN. I think my chairperson has already given you a briefing about what NPST and NMN basically is, so I'm not going to spend time on that. But let me tell you that at NCTE, our mission and our endeavor at promoting teacher education and bringing the level of teachers to its status as the noblest of all professions is what we are striving for. And in this endeavor, this National Professional Standard for Teachers and the National Mission for Mentoring are two of the mandates which have been given to us, which we are doing our very best to fulfill. As far as the work in NCTE is concerned, in April of 2021, we had launched the My NEP Portal 2020, in which there was both the NPSC and the NMN were there on the portal, and suggestions were sought from all our stakeholders, and we received a good number of almost 2,600 in NPSC and some 1,800 in NMN, which we have looked into, and the relevant ones have been incorporated in the documents which are there before you. As you are all aware, the draft document of the NPSC is already there before you from 17th of November onwards, and the blue book on mentoring is also before you on the 3rd from 3rd of November 2021 onwards. And it is my humble request that all of you stakeholders are requested to kindly give your suggestions, your comments, mail to us on our email, which is there on the website. And even in this open house, if we can deliberate on these topics, so that the final document which will be coming out would be a very, very good document to be applicable, to be given to the entire country. At National Council for Teacher Education, let me also tell you that we are working on various other projects also, like our ITEP is there. For your ITEP is there, you are already aware, the notification is out. We are also working on the 2-year BA, the 1-year BA, the 4-year physical education program, of which Madam Krishna Vidya herself is the chairperson, and we are also working on the 4-year the art education. Apart from that, our other endeavors are going on. And as head of the NPSC committee, we had Professor Champion Fulja sir, and as head of the NMN committee, we had Professor Dr. Roy from Navy. And we had a host of experts, for a lot of discussion, deliberations, and the documents that we see before you is the outcome of all that. We are yet to finalize it, and that is the reason why we are having these open houses all across the country, 15 each with NPSC and NMN. We have managed to do a couple of them in physical mode. Because of the pandemic, now we are shifting everything to this hybrid mode. So thank you once again to BHU for partnering with us in this extremely important mandate for Government of India. And I request everyone to actively participate in the session and also to send your comments and your suggestions to on our email which is on the website. Thank you, and Jane. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable experience. Definitely, we are going to incorporate all your suggestions in order to compile the particular report. Thank you, ma'am, once again. Now to express a word of appreciation and gratitude, I request Professor Rajiv Vyas, Head Department of Physical Education, for giving a vote of thanks. Good morning, all of you. It's my proud privilege to stand before you and deliver the vote of thanks, which is really a formality, but it has to be done. I really thank our Honorable Rector, Professor V.K. Shukla sir, for sparing his valuable time with us. Because we know that he has so many important meetings, but he has come to us. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. I also thank my sincere thanks to Mr. Santosh Kumar Sarangi, sir, Chairperson NCTE, and Madam Sherpa, Member Secretary NCTE. Thank you so much for virtually joining with us.
I also thank Professor Swine, Dean Faculty of Arts, and Professor Sushma Gildial, Madam, for organizing such a wonderful workshop, which we'll be discussing on very important issues. My sincere thanks goes to all the panelists who will be discussing about very important issues on education, and my sincere thanks to the faculty members of Department of Physical Education as well as Education. Thank you so much. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. At last, I once again extend the wholehearted welcome to one and all. Thank you. All are requested to join us for a cup of tea. And after, I request all of you to please join for the first open house session on NPST after 10 minutes. Thank you once again. हो गया लाइव पोस्ट कर दिया अब ये अपने आप आ जाता है नहीं वो खोल दिया कैमरा। अच्छा क्या करेंगे बस चल रहा है लेकिन ये देखिए ना वो स्टार्टिंग का गड़बड़ हो गया थोड़ा सा सर, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी कि थोड़ी आ रही थी? हल्की एकदम सर, वही तो बात है ना। आ रही थी ना, हल्की तो आ रही थी ना। हम एडिट कर देंगे सर। नहीं ऐड भी कर देना, लेकिन वो पूरा जो वीडियो रिकॉर्डेड है ना वो मुझे दे देना। हाँ बस इनॉग्रेशन का दोनों का तीनों का डिस्कशन का अलग अलग, एनपीएसटी पे डिस्कशन, एनएमएम पे डिस्कशन। आवाज आ रहा है सबका आ रहा है। आ रही है नहीं सर आ रही है। वो क्या हुआ था स्क्रीन यार का मैंने अनम्यूट कर दिया। चलो अपना तो सही है ना, अपने फेसबुक पे सही है बिल्कुल। है ना, बैटरी तो चार्ज कर लो इसको। अब वो माइक टेस्ट कर लो सारे, अब ये पैनल डिस्कशन में चाहिए रहेंगे अब सब। हाँ आ गई थी, देखो जरा चला के इसको। हेलो हाँ चल रहा हेलो है, इसको रखो। ऑन किया? अब स्टेज पे तुम देख रहे हो क्या? कौन देख रहा है? वो डोगरा सर कौन, वो स्टेज देख रहे हैं जो पैनल डिस्कशन का ही चेंज कराओ ना। हाँ पैनल डिस्कशन में कुछ नाम वाम है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, कौन है डोगरा सर? हेलो 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 हेलो। हाँ ये भी है ना, हेलो ये भी है ना। हाँ ला चल रहा है ना। हेलो 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 हेलो, ये क्या चला गया? कर दिया है। हेलो 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 वो इसमें
पैनल डिस्कशन के लिए डालो, उसको डाल दो। 4 ही है, लेकिन 5 लोग हैं, 4 ही लोग नंबर 4 ही है। हेलो हेलो, 4 ही है, लेकिन 5 लोग हैं, 4 ही लोग नंबर 4 ही है। इसको चला रहे हो क्या? तो हटाओ ना, बंद कर दो इसे। बस इसी पे वो रखना पड़ेगा। ये वाला, ये वाला ये रहने देना उसमें। तो अपना लगा दो आप कुछ नहीं है, तुम पैनल लगा दो। तुम तो बैठे बैठे देखते रहो। नहीं वो एक में तुम लगाओ, किंतु रहेगा नाम लिखा है ये नहीं और कई लोग अच्छे हो भाई। अरे यार ये है, तुम को आओ, उसको क्यों नहीं ला रहे? उसको दो। वो बनी थी ना, हो गया था ना मैम, हैं? नेम प्लेट नहीं चलने दो। जो लगे दो है तो आगे खाली पैनलिस्ट है, नाम नहीं है। क्या लिखा था, कौन लिखवा के लाया? कोई बात दो पैनलिस्ट है। अरे ठीक डाल बेटा, एक ही है पैनलिस्ट तीन और चाहिए। दो पैनलिस्ट दो से कैसे होगा? पाँच दूसरा है।
हो जाएगा ये आगे हाँ good morning, sir. So we have break for the tea. Soon we are going to start this open house discussion. बेटा एक बच्चे एक लड़के को भेजना साइड में बेटा एक जना आजा वो चेयर एक उठा के रख देना वो चेयर वाली चेयर एक उठा के रख दो ठीक है हाँ
Hello. 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 वॉइस यहाँ सिस्टम का लो है. हेलो. 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 विश्वास जी वो ऑन करा दूं. Good morning, Rishabh sir. Very good morning to everybody. Yes, sir. Within a couple of seconds, we are going to start our session. So once they assume, all the participants went for the tea. So once they assume, we will start. Thank you so much. Thank you so much. Okay. I'm here. I would like to again welcome all the esteemed guests for the very first open house session on NPST. That is National Professional Standard for Teachers. Before starting with panel discussion, may I request Sri Rishabh Khanna ji to give a presentation on NPST. Sir, please. Thank you so much. First of all, I'd like to thank the organizers at Banaras Hindu University and all the esteemed guests who have joined us today for this discussion. I also would like to thank the Chairperson NCTE, Mr. Santosh Sarangi, Member Secretary, Mr. Kesan Sherpa, and all the NCTE team members present here for organizing this session so that we can talk about the National Professional Standards for Teachers. To start with the presentation, I'm just going to share my screen, and I just want to check with everyone if you can see my screen. It would be great if you could, somehow communicate that. Is it visible, not visible? Everybody? So right now it's not visible. It's visible? No, slide is not visible. You are visible, but slide is not visible. Slide is not visible? Yes, Just sir. give me a second. Is it visible now? Not yet, sir. Okay, let me try again. Still presenting. Are we there now? Can you all see the slide? Sir, just a minute. Yes, sir. Now it's visible, sir. Thank you so much. So,
we are going to discuss about national professional standards for teachers, and I have exactly 10 minutes to share some brief notes about that. So, what is national professional standards for teachers, and where does it come from? What's the purpose? So, it comes from our National Education Policy 2020, para 5.20, where we are talking about bringing teachers to the core of education. NEP 2020 says that we have to achieve a holistic goal of quality education, whether that is school education, higher education, adult education. And if we have to achieve that, we will have to bring teachers to the center of all educational reforms. And that is where, it was prescribed, it was, NCTE was asked to create national professional standards of teachers so that teachers could really build their career progressions and have a very structured growth throughout their career life cycles. So NPST aims to target 3 core areas. One is education and training of teachers, second is support in practice, and third is career progression. When we talk about education and training, we're not just talking about pre-service education now, we're talking about both pre-service as well as in-service education. So this document will become a guiding document for curriculum framework committees, for universities, for state departments to define the pre-service education, what are the skill sets required when a teacher gets ready to just enter the schools, right? Like we do not want unqualified servants, we also want highly qualified teachers. So when a teacher comes out of the university, comes out of their pre-service education, their B.Ed programs, they have to be at a very high skill level. So NPST will guide that. And also in service education. We have almost 1 crore teachers in India today. Give or take a couple lakhs here and there. And we're talking about the 1 lakh teachers have to build their capacity continuously. Times are changing, students are changing. So these teachers have to be trained continuously. So how to give a structured approach to teacher training for all the teachers who are already in the profession. So that is education and training of teachers. We are also talking about support in practice. So once somebody becomes a teacher, how do we support them on what are the skill gaps that they have? How do they build those skill gaps? How do they identify the tools required? So NPST document has all those skills that a teacher needs to keep mapping themselves to and identify which direction can they grow. And finally, career progression. So till now, a teacher's career progression was that they had to start, at particular level of the school. That let's say if somebody started as a nursery teacher or a primary teacher at a PRT, so they were teaching in primary section of the school for a very long period of time, and then to grow, they had to move to middle school and then to secondary school and then to senior secondary school because the growth was only structured like that. NEP 2020 says that a teacher who's teaching a primary school student, or as per the new structure, which is 5 + 3 + 3 + 4, if a teacher is teaching a foundational stage student for a couple of years, and if a teacher has been teaching the foundational stage for a couple of years, the teacher has developed skills and competencies and expertise that teacher can perform really well in that part of the school. So to gain growth, to gain progression, they need not move to middle school. They can actually grow and progress in the same part of the school. So in foundational stage itself, they can move from 1 level to a higher level and a 3rd level and a 4th level. Similarly, a teacher who wants to start at middle school can start at middle school and then grow there. And a teacher who wants to start at secondary level, there and then grow in that level itself. So that's the career progression structure. These are the 3 core verticals that NPST is targeting. The major, or a bird's eye view of looking at the entire structure is that NPST wants to define the entire life cycle of a teacher. How the teachers are prepared, how teachers are recruited, how they develop their skills, how teachers' appraisals and promotions are done, and how their entire career progression is managed. So that's the core of the NPST document. When we go ahead, as I was mentioning, that a teacher should be able to grow in the same stage of the school. So if a teacher has started in a foundational stage, NPST document has defined that a teacher can move up to 4 levels in the same stage. So in the foundational stage itself, a teacher can start as a beginner teacher, a Pragami Shikshak, then move on and become a proficient teacher in the same stage of the school, foundational stage. So a proficient teacher, which is a Praveen Shikshak. The teacher can then develop further and become a Kushal Shikshak and finally a lead teacher. Now, how do these 4 areas map? So when a teacher will go to the pre-service education, the curriculum that they will be trained on will be directly inspired from beginner teacher standards. The competencies mentioned under the beginner teacher, because that is where they will be prepared to become a beginner teacher.
So once somebody meets all those competencies, once somebody develops all the skills of a beginner teacher, only then they will be hired by a school as a beginner teacher, and then there will be an induction period for those teachers, depending on the state, depending on the national bodies defining that what would be the beginner teacher duration. But once they join the school as a beginner teacher and they're in their induction period, their target will be to showcase all their skills, practice all their skills, but focus on becoming the proficient teacher, to the Praveen Shikshak, which is a stage that every teacher has to reach to by the end of their induction period. The proficient teacher has those skills and competencies which we expect from a teacher to have the moment they close the team at their induction time, with their spent 2 to 3 years in the beginner teacher level. And they achieve all of that in their in-service teacher education by getting mentored with the school teacher, by other teachers in the school, by expert teachers or senior teachers in the schools, by developing skill sets and applying for identified credentials and multiple tools that have been defined. Once the teacher reaches the proficient teacher stage, the teacher becomes sufficient and efficient to be able to plan their own career progression. And for that, the teacher will be learning those skills right from pre-service education, how to plan their career progression. It has been added to one of the skill sets that a teacher should be able to identify their learning needs and plan, right? So once a teacher becomes a proficient teacher, they reach the stage that they can now work independently. And from there, they start progressing towards becoming an expert teacher and then finally a lead teacher. These are the 4 stages of a teacher's growth level. I'd request you all to think about it like a beginner teacher's standards are something that they learn from the university, from the college, from B.Ed colleges, and they need to have those skills before they join a skill, before they join a school. Once they join the school, they just start practicing those skills and they start focusing on skill sets required to become a proficient teacher, and there will be tools, there will be trainings available from different sources for a teacher to be able to define that. So that's how the entire progression works. Now, at the 4 stages, the skills and the competencies that they have to develop have been divided into 4 domains, which we call as national professional standards for teachers. So these 4 domains come out of our needs as a country, our identifying our diversity, identifying our culture, identifying our values. So the 4 areas at the center, we have kept something called core values and ethics. Now, these core values and ethics take care of our constitutional values, take care of our ethos, takes care of our culture, takes care of what we think a teacher should be like as a country, right? So we are a country which has given the Guruship Parampara to the world. So we want to retain that, we want to build that further, and we want to become the world's knowledge hub by defining our own value systems for teaching and learning. So core values and ethics has been kept at the center of the entire system. The second domain is professional knowledge and understanding. We're saying these are those skills and competencies which somebody has to develop even before they enter the class. This is the base knowledge that somebody needs to have. Then comes professional competence and practice. Now, these are those skills which are required to be able to successfully deliver in the classroom, right? Your professional knowledge understanding, which is the second domain, helps in developing the mindset, in helping developing the perspective about teaching, the right perspective about teaching, while professional competence and practice gives you the right tools, right? How do you speak in the class? How do you present in the class? What kind of tools do you use while delivering the lesson? How do you use assessment? All of those things. And finally, the 4th one, professional development and growth, which I was talking about a bit earlier, that a teacher should be able to define and plan their growth and then seek the right support from the right stakeholders. These are the 4 domains. Let me quickly show you what are the kind of value, what are the kind of subdomains or domains mentioned under the 4 standard. So, as I was talking about core values and ethics, we are talking about constitutional values, keeping the nation at the center of all teachers' skill set. A teacher should know what our country stands for, and they should be able to exhibit that in their actions, exhibit that in their everyday teaching. We're talking about constitutional values becoming a separate subject in the schools for teachers to teach the students, but this is a subject that teachers have to study, and they should be well aware about what does the country stand for, what are we building as a nation, what is our nation's role, and follow the constitution completely. Then other skills and domains like professional ethics and values, keeping the students at the center, that students' welfare and students' best interest have to be taken care of.
How do we build professional relationships with each other, with other people in the society? And then how do we use ethically the technology? You see, these are core values and ethics. We are here except separately we're talking about ethical use of technology, because as per our country's values, we are highly focused on the right values and ethics, right? So we're talking about the ethical use of technology specifically in the core values and ethics. We are talking about technological skills for teachers and other domains as well, but core values and ethics, we specifically focus on ethical part of technology as well. Next comes professional knowledge and understanding. These, as I mentioned, are those skills, competencies that somebody needs to develop even before they start practicing. These are the base knowledge structures that a teacher would require, right from curriculum, understanding the curriculum, how does curriculum really work, what affects the student learning, right from their diversity, right from their home situation, to the societal situation, to the regional requirement, what all affects the student's learning, how can a teacher know about that, use different languages, different structures of teaching, but then involve every student in learning. Pedagogical knowledge, understanding of subject, and finally, as I was mentioning, technology use and integration in education. These are some of the domains under professional knowledge and understanding. Once they've developed that, they go and implement this in the classroom in form of learning plans, lesson delivery, assess the students in the right way, manage the classroom communication effectively, and then there are different components and dynamics in every classroom. Whether it's a physical classroom or these days we're doing a lot of things online, so online classroom. A teacher should be able to understand all those components and manage all those components and the dynamics. So these come under professional competence and practice. And finally, professional development and growth. We are talking about how a teacher becomes the center of their own growth. We train them right from the pre-service education, right from their days. So how do you identify your own learning needs? How do you get into reflection and reflective practices? How do you engage and participate in learning communities? So that entire piece, that entire bit, where a teacher is able to develop continuously, right from beginner teacher to expert teacher, and is able to take responsibility for the same, that comes in domain number 4, which is professional development and growth. So these are the 4 domains. Let me quickly pick up any one domain, any one competence out of that. So let's pick up learning plans and professional competence. And a learning plan domain would look something like this. So the skills that a beginner teacher would want or would need to have are in the beginner teacher in performance criteria. Under learning plans, they have to learn this from the university, from their college, from their initial teacher education preparation. Once they reach the school, they already have this beginner teacher competence in learning plans. So they start implementing it and they start learning the next level, which is at the proficient teacher level. Once they have developed that, and not just in learning plans, but in all the areas, all the domains, all the subdomains, the teacher applies to become a proficient teacher. And then there are structures of verification, structures of implementation, structures of assessment of this teacher's skill sets, which will be implemented, and the teacher will be given a proficient teacher status. Once the teacher reaches the proficient teacher thing, again in learning plans, if we see, the teacher moves to the expert teacher competence level. They get trained on that, they're attending for these trainings on that, they work with their peers, they work with different school teachers, they work with their principals, and they reach that level for all the domains, and then they apply for expert teacher. Again, their skills get verified, they get evaluated, student evaluation, 360-degree feedback from parents, from students, from peers, from seniors in the school. Their skill portfolio gets verified, and then once all these different kind of assessments are done, they gain an expert teacher status, and then they move ahead similarly to become a lead teacher. So these are 2 domains and 2 skill sets, and their transition from beginner teacher to lead teacher on this slide. You have the document with you. There are a lot of skills, a lot of domains, subdomains, and performance criteria for every level of teacher's competence. So that's mainly the skill set, how somebody really reaches all these 4 levels, and how somebody can move from one area, one competence level to the next competence level and continuously grow in their careers. I'd love to answer any questions that all the participants might have. I'd love to get into the discussion with all the experts here on the panel today.
And with this, I'd like to thank all the participants here, and I'd like to welcome all of us present in this discussion today on making teachers' careers successful and supporting teachers throughout their careers with NPST and beyond NPST. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing the valuable information about the NPST. Definitely our participants going to be benefited and have some idea to discuss this particular very important issue regarding the new education policy. Thank you so much, sir. May I now request our esteemed panelists to please have a seat on the dais. I request the chairperson of NPST session, Professor HCS Rathore, and Professor D.K. Durya, Dr. Alka Singh, Dr. N.K. Sahi, Dr. Rachana Srivastava, please have a seat on the dais. Moving forward, I am requesting Professor Now I'm requesting Professor Sushma Gerayal, Program Coordinator, to felicitate our Chairperson of NPST session, Professor HCS Rathore, former Vice Chancellor, Central University of South Bihar, Gaya. Now I am requesting Professor S.K. Swine, Dean Faculty of Education, to kindly felicitate our esteemed panelist, Professor D.K. Durya, former Vice Chancellor, LNIP Gwalior. Kindly, all are requested to kindly clap. Dr. Alka Singh, Principal, Vasanta College, Rajghat. Sir. Dr. N.K. Sahi, former Principal, Central Hindu School. Dr. Rachana Srivastava, Principal, Vasanta Kanya Mahavidyalaya, Kamakhya. So, thank you, sir. So, before starting our panel discussion, we are having an unveiling of one of the book written by Dr. Akhil and Dr. Abhinav Singh. So, I'm requesting panelists to unveil the very important book in the field of physical education. So ma'am, please. So it's this book is all about the multiple choice questions, MCQs, for the field of hockey. So it might be beneficial for the
aspirants for the government and getting more knowledge about the hockey. So I must congratulate both the authors to return to a very good book from the entire Banaras Hindu University family and the Department of Physical Education. Thank you, sir, ma'am. Now I hand over the session to the chairman, Professor Rathod. Sir, please. Hello, am I audible? Very good morning. A very good morning to all esteemed colleagues. From the teacher fraternity at all levels, dear students, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank the organizers for considering me to be a panelist on a topic in a field with which I have been associated all through my life. I also thank the NCTE, which has taken care to take the feedback from all stakeholders throughout the country before finalizing a very important document which is perceived, as we have just heard, to translate the vision of the national education policy on the ground. Although, in my considered opinion and whatever understanding I have developed of the national education policy, this document which has been brought forward by the NCTE for national level debate encompasses a very important recommendation of the national policy. National policy, if you see, and I see it as our aspiration as a nation to make education more meaningful, productive, that leads to the holistic development of our future generations who can contribute not only to nation building by competing with the best of the technologies that come and that evolve in times to come, but also bring India to a level of acceptance by the whole world, to accept the character, values, ethics, morals, and the perpetual idealistic perspective that this nation has been living and practicing times immemorial.
Because only then, I mean, if I speak anything in particular, I may be cornered as preaching something. But then if you look into the opinion of even scientists like Einstein, real happiness lies in being in peace, in harmony with nature, in harmony being with one's own self and the life space within which one survives and lives. And this land is unique in the whole world to preach such practices which teaches you to be in harmony with nature. When I say nature, it is just not the physical nature which we study under the environmental sciences, but also the human nature, but also the nature that resides within each individual, the divinity. So that way, if you see and analyze the national education policy, you find that the nation has in its core a system of education to evolve by 2030, which produces such holistic citizens who can, if I quote in the words of Malviya ji, who have the best of the Western knowledge and best of the Indian traditional wisdom, who are holistic personalities who can really bring happiness and peace not only in India but in the whole world. Now, so therefore, to encompass such a deep philosophy in one small document is not possible. In order that we achieve this larger goal of the national education policy, the whole world, not the whole world, the whole country, all sectors, it's not only the teachers, it's the whole of the society will have to come forward to set the prestige of the education, the system of education, the system of governance, and everything, its practice, in a manner, in ways that all contribute to the realization of the larger goal which I have just referred to as enshrined in our national education policy. In this context, I am sure that we all have by now read the national education policy document, and even if we have not read personally, we have attended seminars, conferences, workshops, which were held in almost thousands of them across the country. We all know what it is, what the national policy says. Now, in the national policy, one of the most important things that has been said, or rather, the teacher is the focus. Because nothing happens without a teacher who is committed to take forward this boat. Now, in this context, the policy also takes into care the grievances of the teachers working in the system. They hardly have avenues for their progression in their careers. And that also demotivates them and demoralizes them. The policy also envisages that quality of teaching and learning is suprememost, cannot be compromised and should not be compromised. It also believes and prescribes rather
that only highly motivated, best lot of the youngsters should come forward to become teachers. And there are so many other things where I have to come to the theme. Now, all this will happen when we start in certain directions. Now, from that perspective, if you look, then the National Council of Teacher Education, I really congratulate them. They have brought out a document, a brief summary of which was just presented by Dr. Khanna, which we have heard, and then this document, I suppose that some of us must have read it. I requested the document and I read it and developed my own understanding about this. Now, since this document has been floated to seek our feedback, our opinion, our perspective, with the intention, and the NCTE wants to receive that feedback with the intention of further refining and improving this document. Because this is the purpose of arousing a public debate on any document. Now, before I throw open for a panel discussion or a discussion with all of you, invite your opinions and everything, and then our organizers will send a consolidated feedback to the NCTE. I would like to say that professional standards in any branch or any profession are a must. And perhaps in the history of Indian education, a very systematic effort has been made to think in this direction, and perhaps this is the first document of its kind that has been produced in this country. Although there are evidences, and this is a fact, that NCERT, UGC, and there are certain other organizations, even certain universities, from time to time have been bringing out documents called as professional ethics, professional code of conduct, and so on. But thinking of professional standards as a whole and titling them as national professional standards, I think this is the first exercise. And NCTE deserves a great applause for this from our end. Now, having read this document, before I throw open for panel discussion, I would like to give my own opinion about this document. And then we'll move forward. Or another method could be that you give your opinions and then I summarize. So how do you want me to go? What would be better? Should I first give my ideas, what I have thought? Huh? Okay. So this is the opinion of the House that I should come in the end. Fine? It's perfectly fine. So how do I oppose to... Hello, thank you. Thank you, sir. All the respected panelists on the dais, our fellow teachers, academicians, educational administrators, teacher educationists, dean directors, member of SCERT, principals, teachers of private and public sectors, NGOs, our scholars, and media persons. I am very much thankful to NCTE that they have given us opportunity, especially to our university, to hold this open house discussion.
And we have to discuss the NPST, National Professional Standard for Teachers. See, NCTE deals with the two types of teachers. That's my opinion. One is the educational field, those who are B.Ed and M.Ed, and do the general teaching in the different schools. And on the other side, the physical education teachers, which also teaches in the classroom, but off the classroom in the field also. And because I am the field from physical education, I was the Vice Chancellor of the National Sports University Physical Education. So I will be more confined on to physical education teachers. Because in Gwalior, where we used to organize refresher courses and for KVS teachers, Navodaya Vidyalaya teachers, Madhyamik Shiksha teachers, Army school teachers, DPS, and there we found the grievances. This process was there before coming out this document. There are a lot of things which has not mentioned in this document. And what I'm emphasizing here, I request the chairperson and the secretary of NCRT to please look into it. And also, when you come out with a document and send it to the NCTE, please also consider these things. We have already gone through the key principles of national education policies, and naturally that is acceptable, but there are some more things which has to be considered, which has to be taken care of to take out the grievances of the teachers, which I have noticed, especially in the field of physical education. If the teacher is selected on the post of PET, PRT, TGT, the day he joined, and they retired after 30 years, they retire on the same post. There is no provision of their promotions. And in this document also, they have not mentioned it about anything regarding the promotion. We say they are beginner teachers, training teachers, and profession teachers, expert teachers, and leadership teachers. Of course, agreed. But how they will be promoted? What will be the criteria? They have not mentioned in this document. They say you have to teach this. Beginners has to teach this. Expert has to teach this. In the last pages from 35 to 39. But how to promote them? There is no criteria. Like in university system, they have a criteria from assistant professor to associate professor and associate professor to professor. But in school level, they don't have. The main thing, if we see and understand the challenges faced by the physical education teachers, they are low salary. They are only highly stressed because the teacher and the principals and the management, they don't allow them to work in their own field. They take their work from outside. There must be some standard for the administrators and the principals also, who can be justified, because these teachers, they are also selected through open interview board. They are fully qualified. They have, and when they are qualified and they are appointed through proper interview, why not they can have their own identity instead of doing some other work which school mentioned them. If you see, very small example, if any teacher is on leave in any other school of other stream like chemistry, physics, they put physical education teacher. Why? Why not other teachers? Why they put only physical education teacher? They are also selected through proper channel. They are not come from the backdoor entry. Other thing is there is no motivation. We expect a lot of things from the teachers, but there is no motivation because there is no promotion. They have no facilities. If they ask from principals or the administrators or the managements, he provides some fund so they can deal with the students and provide facility to the students. They say, no, we have diverted funds to library. We have diverted in that lab. Why? And then you expect so many things from physical education teacher. I request NCTE to put some standards and
benchmarks in this document and guidelines so they can be followed and this frustration can be washed off. You know, physical education teacher is the most popular teacher in the schools. Most popular. And he is the one, he worked without ego and he worked without seeing the time. He never see the time. If my time is over, it's 5 o'clock, I don't have class, I have to go. So we must see this thing in this, especially in this, while discussing this panel, regarding the welfare of physical education teachers and the you can say rather the importance which they have to get at par with. Now I'm thankful to the NCTE, National Education Policy. They have declared physical education as core subject. We have submitted a document in 2017 and they have a meeting of Education Ministry. That time it was the MHRD, Sports Ministry, and they have invited NCRT also to implement it right from class 1 to class 12, where we have emphasized what type of, because Fit India movement was supposed to be introduced by Honorable Prime Minister, and they said, no, we cannot take in of this document because it is not a core subject. We consider it's a co-curricular activities. Now it is a core subject, and very soon it is going to come as a one of the subject, optional subject in the PCS exam. So there is a big scope now. So I request all the principals and administrators, those who are sitting here and in the document also, I request, please give this, they must take care of this physical education teachers. They are working the day night. They are working for teaching classes also because they are subject also, and they are working in the field also. And they don't see the time. We have to see this thing. And I will, the last, they are, all teachers are the gatekeeper of information. There is no doubt about it. And NCRT and whatever document, when they bring the literature, especially literature, they are giving more emphasis to other subjects. I request them to give emphasis on physical education also, as well as NCTE also. They must set the norms and the guidelines, because, and they must link the Aadhaar card of the teachers when they are working for the private sectors, private management colleges, private schools. There are a lot of problems are there. There are a lot of misappropriate funding is there. They don't give their proper salaries and they want their all work. So this has to be taken, which is missing. That's why I have mentioned here, and I request the chairperson, Mr. Sarangi, and he himself agreed in the beginning. He himself said, there is a different cadre and there is a less salary. He mentioned it here before starting this when he was addressing. And treatment of the teacher and the management of the teacher are very different as per the choice of the principal, as per the choice of the management. This has to be taken care of. So we, the teachers who are the base or the root, where because our government and our national education policy who are more concentrating, and because teacher is the key root, is the center point of building up a new future for the country. I submit here my comments and I will join again if required. Thank you very much. Thank you. Good afternoon, one and all. I feel humbled and privileged to be sitting among such stalwarts of the university and education system, and put up some humble ambitions to be considered after having gone through the entire guidelines that were given to us, which I have read thoroughly. In continuation with what Professor Durya just now said, when I see this document and talking about the teachers for having 4 stages of gradation in the schools, it automatically, when you look at the stages,
it should and it must bring out a kind of improvement in their existing salary structure and upgradation in contrast to what was existing in the schools before. Because a primary teacher retired as a primary teacher, a middle school, and very seldom they got a chance for promotion to the next cadre. So there was stagnation in their entire career without any upgradation. It's a very ambitious program in which an upliftment and all-round development of the teachers is mentioned. And theoretically, yes, but we have to look into the emotional as well as the economical upgradation in terms of the stages that are mentioned, so that at every level, whether it be the primary or the middle or the senior level, the teachers themselves see a kind of motivation to work with this ambitious project of leading themselves from a beginner teacher to a lead teacher. But in continuation with this, the other problem that I foresee is in this fabric of working in an idealistic situation such as this, at times we get lost in our upgradation, in the personal upgradation of the teacher in terms of paperwork, and somewhere the teaching learning gets a second stage. It's secondary to the main purpose of education. We are seeing this in higher education system where we are all sitting. There is a system of upgradation and we are all, of course, moving forward. But then what happens is in trying to accumulate or gather all those points which are there for promotion, I personally feel as a teacher myself that somewhere the learning system suffers. Our interaction with our students, because most of the time as teachers, even teacher education when we talk about, as teachers, we are more involved with our process of upgradation. So the education system somewhere seems to be kind of diluted in terms of the knowledge that was imparted years back when we were little children or we were studying. It is a document which talks about a very, to me it appears, it talks about an idealistic situation of trying to rebuild the India of having the world teacher. But I think as Professor Rathod mentioned right in the beginning, that being in connect with our roots, which comes from within itself, and which should be the motivation factor for allowing us to be good teachers, to be good human beings, to be connected with nature, and impart the same to our students who come to us, rather than the materialistic goals of the West, which we are all moving forward. We need to, of course, improve, we need to get better, but the very system that was existing, I think if we take it up seriously in terms of being humane to our fellow beings, to our students, and to the system of education, will in itself bring about a betterment. So this kind of proposal that has come up is definitely, I'm a little skeptical about it, although it is a little ambitious to me in the sense that there is more of paperwork. And the third problem that comes to me is, again, we or whoever are the benchmarkers. That has come up in the universities and the colleges as well. The reviewing committee, the principals in the schools, the principals in the colleges. There is a kind of bias that is existing in the system itself. And I think we need to eradicate that, because who is going to decide? It is us, all of us sitting here only, who will be mentoring, who will be the supervisors. And if our own concepts are biased, obviously we will not allow the teachers to grow in size. So my humble submission
for this would be that we should look at it from an angle where it gives a lot of, kind of openness for the system to decide as to who deserves it. I mean, like beginning from a beginner teacher to a lead teacher. And then that could be sometimes contaminated in many ways, which will not be helpful for the system at all. So I would request, sir, to take it up that the teachers themselves should be made to feel economically as well as emotionally secure. And then the passion for actual teaching, especially at the school level, will definitely be a fluid or a system which will help us all to grow. Thank you so much. With the permission of Chairperson, Mr. S.C. राठौर, मैं आप लोगों के बीच कुछ कहना चाहता हूं और इसका मौका जो मुझे दिया गया है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा, और स्पेशली प्रोफेसर सुषमा गढ़ियाल जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। सेवानिवृत्त होने के बाद अगर किसी को समझा जाता है तो ये बहुत बड़ी हमारी ये उपलब्धि है, मेरा सौभाग्य है। मुझे कुछ बातें आप लोगों से करनी है क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ा रहा और इसमें जो नेशनल स्टैंडर्ड पॉलिसी जो टीचर्स के लिए बना हुआ है वो ज्यादातर स्कूल्स के पर ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमने इसको थॉरली पढ़ा है। कुछ जगहों पर मुझे कुछ सुझाव देना है और हमारे चेयरपर्सन है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। ये मेरे जीवन के बहुत बड़े मेंटर रहे हैं क्योंकि मेरा यह सौभाग्य था कि इनके साथ मैं कुछ दिनों तक काम किया और इनके निर्देशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद जब मैं प्रिंसिपल हुआ, इन्होंने मुझे कहा था कि तुम प्रिंसिपल लायक हो। तो जब मैं प्रिंसिपल बना तो इनके बताए हुए मार्गों पर मैं चला और उसमें मुझे जहां तक मुझे है मैं बहुत सेटिस्फेक्शन अपने को महसूस करता हूं कि संस्था में जो मैंने काम किया वह हमें सेटिस्फेक्शन होता है। अब समाज को भी जरूर फायदा हुआ होगा उससे। पहली चीज तो यह है कि कोई भी पॉलिसी बनती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छी चीजें लिखी रहती हैं। उसमें जितनी चीजें लिखी रहती हैं बहुत ही स्टैंडर्ड से और बहुत ही क्वालिफाइड लोग बैठ करके उसको तैयार करते हैं। हमारा दो पक्ष है क्योंकि आई एम ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल पर्सन। मैं प्रैक्टिकल हूं। थ्योरी को जब तक प्रैक्टिकल में डालेंगे नहीं आप, वो थ्योरी बेकार हो जाती। तो मेरा कुछ पॉइंट ये कहना है कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि हम अपने समाज के आने वाले जो पीढ़ी है उनको कैसे शिक्षित करें कि वह हमारे देश को प्रोग्रेस कर सके। तो एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स को सेंटर में रखा और
यह सच्चाई भी है कि किसी भी संस्था में टीचर ही सेंटर में होता है, बाकी सब हेल्पर होते हैं, उनको हेल्प करते हैं। लेकिन अगर शिक्षक शिक्षक है तो निश्चित रूप से वो छात्र का जीवन उज्जवल बनाता है और राष्ट्र को समर्पित करता है अपने अपने कर्तव्य को। हम लोग बचपन में गुरुजी विद्यालयों में हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते थे, कितना सम्मान था उनका। क्यों सम्मान था? क्योंकि टीचर बनने के बाद उन्होंने टीचर का जो वर्क है डिवोशन के साथ करते थे। तो डिवोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टीचर, इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बिकम ए टीचर। हमने यहां देखा, लिखा हुआ है कि टीचर्स को फ्रस्ट्रेशन होता है लो सैलरी कर। थोड़ा सा मेरा व्यू दूसरा है। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी देखे हैं, जिनका डिवोशन रहा वो यूनिवर्सिटी लेवल में हो या स्कूल लेवल में हो, टीचर का, वह टीचर समाज में पूजा गया, छात्रों द्वारा पूजा गया और उस स्टूडेंट के लाइफ में जीवन भर वो याद रहा। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए और जिससे कि हमें एक अच्छे टीचर, इसमें जितनी चीजें लिखी गई हैं, क्या इंप्लीमेंट एक अच्छे टीचर के लिए हो पाएगा, इस पर मुझे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्योंकि अच्छा टीचर बनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जितनी चीजें इसमें लिख गई हैं, मैंने उसको बड़ा थॉरली पढ़ा है और देखा है कि पेज नंबर 7 पर लिखा है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर्स, लो सैलरी, नो ग्रोथ एंड हाई स्ट्रेस। थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ कहना है। मैं अपने टीचिंग लाइफ में देखा, कम तनख्वाह मिलता था तो सैलरी कम थी, तो सैलरी बढ़ा दी गई 2000 के आसपास, तो फिर सैलरी बढ़ा गई 2006 में, फिर सैलरी बढ़ाई गई 2016 में। क्या शिक्षा में परिवर्तन हुआ? शिक्षक के अंदर क्या परिवर्तन आया? एक एक घटनाएं पेपर में निकलती हैं, मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि आप शिक्षक बनने के लिए होड़ लगाते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं शिक्षक बनने के लिए, और विद्यालयों में जाकर के आप क्या करते हैं। इस पर विचार करने की बात है। इंप्लीमेंटिंग पावर को होना चाहिए, जिससे कि उस शिक्षा को जो हमने बनाया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वह वास्तव रूप में उसको हर जगह इंप्लीमेंट हो। शिक्षक वही बने जिसका डिवोशन हो। लिखा है कि शिक्षक क्विट कर जाते हैं अपने प्रोफेशन से क्योंकि सैलरी लो है। मैं इसको नहीं मानता। हर क्षेत्र में कहीं भी जाइए, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, इंजीनियरिंग पढ़कर बच्चे, मेडिकल पढ़ के बच्चे निकलते हैं और जहां बेटरमेंट मिलता है वहां चले जाते हो। इसको तो ना आप सैलरी बढ़ाकर रोक सकते। यह तभी बढ़ सकता है जब शिक्षक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र के प्रति डिवोशन हो, और वह जिस दिन उसके दिन में यह समझ में आ जाए कि हम तैयार हुए हैं राष्ट्र के लिए, हम पैसे के लिए नहीं बने। क्योंकि हम लोग प्रशासन में भी रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि अध्यापक बहुत क्वालिफाइड अपॉइंट होते हैं, उनके जितने भी नॉर्म से उसको सेटिस्फाई करते हुए अपॉइंट हो जाते हैं। आफ्टर दैट हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज,
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टीचर बनना, उसको कमी होना, ये अलग फैक्टर है, बट जिसको भी वो टीचर बनना हो, वो उस प्रोफेशन में आवे तो अपने आप को यह समझ ले कि मैं राष्ट्र के लिए एक निर्माता के रूप में आया हूं, क्योंकि समाज से आने वाले जो बच्चे उनके पास आते हैं वही कल के भविष्य है, और उन बच्चों को जब तक एक अच्छा टीचर नहीं मिलता है वो आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें स्टेजेस भी दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इसमें प्रमोशंस होंगे। टीचर्स के प्रमोशंस होंगे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में, और सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज। इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा और कैसे होगा, इस पर विचार करने की बात है। इसमें लिखा है कि जो नेशनल टीचर्स का जो काउंसिल है वो करेगा। वो तो एक स्वतंत्र प्रभाव बैठा हुआ दूर, आप ऑनलाइन अपने भरेंगे, आपने जो भरा है विथ प्रूफ, वह प्रूफ सही है कि गलत है, आज के जमाने में कौन देखता है, बहुत समय बदल गया है। तो प्रूफ में आप, हमारा जो व्यू है उस प्रूफ के साथ साथ स्टेज पार करने के लिए टीच गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स को भी सम्मिलित किया जाए। उसमें स्टूडेंट्स के भी व्यूज ली जाए और गार्जियंस के भी व्यू ली जाए, समाज के व्यू ली जाए और संस्था का व्यू ली जाए, और एक इंडिपेंडेंट संस्था हो जो इसको चेक करे कि वास्तव में इसको स्टेज से स्टेज 2 लाने लायक है कि नहीं। क्योंकि संस्था में जो हेड होता है उसके सामने बड़ी परेशानी होती है, वो कुछ नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मालूम है कि मुझे वहां सैलरी कम मिलती है, वो टीचर जो है डिफरेंशियल में जाते हैं, काम ज्यादा वहां करना पड़ता है, उसके बाद उनको मेंटल टेंशन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आप अगर सर्वे करें देश में तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं और कितने परसेंट टीचर्स प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये रूल्स प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होगा? क्या उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कोई प्रोसेस तैयार करेगी कि जो कम सैलरी में ज्यादा काम करते हैं? तो इन सब चीजों पर विचार करना है। हमें ये बात कहने में मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, और कुछ लोग हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि शिक्षक बनने के लिए जो डिग्रियां दी जाती हैं, वो डिग्रियां, बहुत से कॉलेजेस का एग्जाम्पल मेरे पास है, वहां पर सिर्फ डिग्री पकड़ा दी जाती है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पढ़ता नहीं है, टीचिंग लर्निंग नहीं करता है, सीखता नहीं है, और साल भर घर बैठता है, एग्जाम देने जाकर के उसको डिग्री मिल जाती है। इन सब चीजों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, या जो स्टैंडर्ड बना हुआ है टीचर्स के लिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पॉलिसी जो फॉर टीचर्स बना है, उसमें यह भी होना चाहिए कि सर्टिफिकेट किसी को ऐसे न मिल जाए कि उसके पास सभी क्वालिफिकेशंस हो गए, अब वो टीचर बन सकता है। प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या यह वास्तव में टीचर बनने लायक है कि नहीं। एथिक वैल्यू पर जोर दिया गया है। एथिक वैल्यू ये बहुत अच्छी चीज है। विदाउट एथिक वैल्यू कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। और एथिक वैल्यू में मैंने अपने विचार से जो लिखा है
उसमें यह इंक्लूड होना चाहिए कि उस टीचर के अंदर त्याग की भावना हो, एंडोनमेंट। सेकंड, डिसिप्लिन पर्सन हो। एक टीचर अगर डिसिप्लिन होगा तभी अपने बच्चों को डिसिप्लिन बना सकता है। वर्च्यू, वैल्यूज, उसके पास गुण हो। ड्यूटीज, कर्म के प्रति डिवोशन हो। और डिवोशन टुवर्ड्स नेशन इज माई ओन ड्यूटी, इज माई ओन इंटरेस्ट, इज माई ओन मोटिव। इन सब चीजों को सर बैठे हुए हैं, आप लोगों को इसमें थोड़ा ज्यादा करना है। इन सब चीजों को ट्रेनिंग पीरियड में एथिक वैल्यूज को ज्यादा रखा जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एथिक वैल्यूज पर दी गई है कि हमारे देश में जो ये वैल्यूज कम होती जा रही हैं, इस पर ज्यादा जोर जाए। बच्चों को शुरू से ही इस तरह की भावनाएं को पढ़ाई जाए और यह हर स्टेज पर हो, टीचर के अंदर भी हो, वह हर स्टेज पर हो। केवल स्टेज फर्स्ट में ही नहीं उसका असेसमेंट हो, वो हर स्टेज में उसका जो है इस वैल्यूज को असेस किया जाए। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं प्रिंसिपल था और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे सर डीन रहे हैं एजुकेशन फैकल्टी के, प्रोफेसर राठौर साहब, इनके समय में प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह है वहां पर एक प्रोफेसर, उन्होंने एथिक वैल्यूज पर बच्चों का एक स्पेशल क्लास चलवाते थे। कोर्स में नहीं था, वो अलग से एक स्पेशल क्लास चलाते थे बीएड के स्टूडेंट के लिए। उसमें मैं भी जाता था, लेक्चर देता था, रिटायरमेंट के बाद भी गया, लेक्चर दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वो बंद हो गया। हमने पूछा डॉक्टर साहब क्यों बंद कर दिए इसको आप लोग? तो उनका कहना एक ही था कि प्रशासन बदल गया, वैल्यूज बदल गई। तो इस तरह से अगर प्रशासन बदलने से वैल्यूज बदले तो फिर शिक्षा का कहां उत्थान हो सकता है? कहां से एथिक वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं? ये तो एथिक वैल्यूज डेवलप करने के लिए तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। अगर एथिक वैल्यूज टीचर नहीं डेवलप कर पाता है तो वह सब कुछ बेकार है। और एथिक वैल्यूज में वही है जो आपको सेंस मैंने बताया आपको कि उसको जो है जो 5 चीजें 6 चीजें बताई हैं वही चीजें उसमें जरूर बताई जाए और सिखाई जाए, बताई जाए कि आप अपने लाइफ में इसको रखिए। NEP 2020 नेशनल पॉलिसी 2020 का जो बना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने के लिए है, एनसीईआरटी को सिलेबस बनाना। एनसीईआरटी जैसी सिलेबस बनाएगी वही इंप्लीमेंट हो पाए। अंत में मैं यही कहूंगा कि टीचर्स के अंदर जो गुण होने चाहिए वह गुण हमेशा एक तरह से मेंटेन रहे और वह उसके जीवन पर्यंत चलता रहे। और असेसमेंट बॉडी जो हो उसमें बाहर के लोगों को भी रखा जाए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, मेंटर। लाइफ में मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसी के जीवन शैली पढ़कर उससे प्रभावित होते हैं और उस पथ पर आप चल पाते हैं।
शिक्षक भी अगर एक मेंटर के रूप में अच्छा हो, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि बहुत से रिटायर्ड पर्सन्स टीचर्स हैं समाज में, जो उनके पास एथिक वैल्यूज हैं, वो अपने जीवन को समर्पित कर दिया शिक्षा के लिए। ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाए समाज से, और ऐसे लोगों को ला करके स्कूलों में, कॉलेजेज में उनसे मेंटर का काम करवाया जाए। प्रोविजन है, बट सिलेक्शन को किया जाए। ये ना हो कि किसी को बुला करके renowned persons who are very experienced person in their field of education and devotion, they should be selected for these things, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस ही मुख्य है। ये नहीं कि हमारे वो परिचित है उनको बुला लो। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और जब ये चीजें लागू हो जाएंगी तो निश्चित रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, टीचर्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और टीचर्स के स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ेगा, क्योंकि टीचर के बिना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Respected Chair, all the panelists seated here on the dais, and all my senior colleagues and dear students. I am very grateful to the organizers for inviting me to be part of this panel discussion on a very important topic, which is NPST. I was listening to my esteemed co-panelists, and I was thinking when teaching became a profession. Because in India, we never saw teaching as a profession. In fact, it was treated as a something which is transacted. Education, learning, knowledge, it is transacted to the one who aspires to have it. And with this, we had entered the new modern age. But somewhere it was realized that no longer do we have those gurus, and no longer do we have those shishyas who were there to have knowledge, who were there to अपने अंदर वो ज्ञान को वो आत्मसात करने के लिए. And so we have these standards. As a principal, as an administrator, I feel that it is a very important document, because when a teacher, when a person enters the stream, let me say of higher education, because we belong to the college stream. So when a person enters the system as a teacher, that very day, at least in colleges, the person starts stagnating, because he or she feels that he has achieved a goal, and now he can relax. Whereas it should have been vice versa, because the person has to continuously improve herself, himself, has to go through training, not only for the subject, but also in teaching methodology and how to connect with the student. As principal, I feel that if I have to set some standard for my teachers and for my staff, I have to at least follow them. As sir was saying,
that punctuality, dedication, commitment, honesty, all these are very important factors, very important qualities of a teacher, of an administrator. If I am not there at 10, I reach office at 11, then how can I expect my staff to be at 10 in the office? Or if I do not take class, if it is scheduled at 10, I begin my class at 10:30, then how can I ask the teacher as to why he or she is not in the class? So these standards are the requirement of the day, and standards are always laid down, and then we have to try to reach to them. So we have to find a way so that we follow those standards, we get those standards. I am a very late entrant in this panel discussion, because in the morning itself at 9 I was informed that I have to be here as a panelist. So I have not very much gone through the document, as I thought that I would be sitting there and listening most of the time. But when I was listening to various opinions, I realized that some questions which we have to answer and which have been raised in this document are how to build a skill. On the part of the teachers, they have to think as to how to build skills. How capacity building should be continuous. It should not stop at any point. How to find tools to build this capacity, to build a skill. How to gain growth, not only in career, but as a person too. At least in higher education, under career advancement scheme, teachers have a lot of opportunities. And they can have the ultimate which is available in a college. Now they, under UGC guidelines of 2018, college teachers can also become professor. But certain minimum standards have to be fulfilled. They have to write papers. They have to plan as to what they are teaching their students, because marks are given for this factor also. So if we go unprepared in the class, if we do not know as to what we are going to teach, and it becomes only a lecture, then we are compromising on the standard. So to gain growth, we must improve ourselves. We must know what tools we have to adopt so that we build our capacity as a person, as a teacher, and not only as a career person, as Professor Alka Singh ji was pointing it out. Then one very pertinent question in this document is raised: should promotion be time-based or efficiency-based? As principal, I also have this dilemma. Say somebody who is serving the institution with wholeheartedly, and there is another person who is just fulfilling his or her duty. See, I am a principal, so I have to face this problem. And in colleges, we have certain issues like this. Then what should we do? Promotion and other benefits are given equally to all. So this is a very pertinent question that has been raised in this policy document where I was reading it, and this was given. And it was also said that in 2030, all teachers would be evaluated, and after that, every 10 years, teachers will be evaluated. Not only teachers, but administrators also. As an administrator, for me, some standards which are required to be part of the system, education system, college system, or even a school system, are building of professionalism begins with oneself.
professional ethics and values about which this policy document talks about are very important aspect, and we must discuss it. We must try to follow. From 6th Pay Commission to 7th CPC we have come, but do we follow other norms which have been laid down by UGC, like norm of time, how much time do you spend in your workplace, or such other things? Then commitment to students, professional relationships, commitment to not only profession but to your institution. And now the focus is on responsible and ethical use of technology. We all know that so many problems are being faced by all of us because things have changed in the past 2 years. So on all these questions, we have to think. We have to find some ways so that minimum standards are maintained. I am saying minimum standard. That is at least maintained. And the college system, the schooling system remains what it was. If we want to become a word guru, if we अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारत जैसा कभी पहले था शिक्षा के क्षेत्र में वैसा ही है, जैसा कि एनईपी में कहा गया है, जिसमें हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको ही वहां पर लाने की बात कही गई है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं जिनको सबने बताया है। तो अगर हमको वो चाहिए तो हमें ये स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा और इनको लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बेंचमार्क्स आर ऑलवेज सेट, ओनली देन वी स्ट्राइव टू अचीव देम। नहीं तो हमारे पास अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, कोई आदर्श नहीं होगा, तो हम किसके लिए हम कोशिश करेंगे? तो लेट अस रिमेंबर व्हाट आइंस्टाइन हैड सेड कि शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज समथिंग विच वी रिमेंबर इवन आफ्टर लीविंग द स्कूल और कॉलेज। ये शिक्षा होती है। तो क्या हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या उनको ये याद रहता है कि क्लास में जब पढ़ाया गया तो उन्हें कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया, कुछ कंपैशन भी बताया गया? ये हम सिलेबस के माध्यम से ही ट्रांजैक्ट करते हैं और करते आए हैं। सो दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज of course an important initiative, and we should discuss it more and more. और कॉलेजेस में भी मुझे लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके केंद्र में हैं, उनके सामने इस चीज को आना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट उनको मालूम पड़े कि क्या चीजें कही जा रही हैं और दे ट्राई टू इम्बाइब देम। तो आई मे बी साउंडिंग वेरी अनप्रिपेयर्ड, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 9 बजे मुझे सूचना मिली और मैं श्रोता से यहाँ पर बैठ गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एज मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने अपनी बात कही। और धन्यवाद सर मुझे समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है आई कैन स्पीक इन हिंदी। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है जैसे हिंदी ना समझ में आती हो। चलिए दोनों में बात करेंगे। मुझे लगता है कि मातृभाषा में बात करने में ज़्यादा सहूलियत होती है, मुझे भी होती है, हालांकि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ टूटी फूटी। देखिए मुझे लगता है कि हमें इस डॉक्यूमेंट को समझने में गलती हो गई। तो मैं थोड़ा सा बड़ी सरल भाषा में आपको सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ ये है क्या आखिर। देखिए इसमें लिखा है ऊपर नेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इसको नेशनल इस रूप में इस टाइटल के साथ इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसका कारण क्या है कि ये डॉक्यूमेंट बेसिकली जब आप इसमें घुसेंगे, और अभी आपने खन्ना साहब का प्रेजेंटेशन भी देखा होगा, तो ये जो टीचर्स के कैरियर प्रोग्रेशन की बात है कि वो जो आते हैं प्रोफेशन में प्राइमरी में और प्राइमरी टीचर ही रिटायर हो जाते हैं, कोई प्रोग्रेशन के उनके एवेन्यूज नहीं है, उनके पास स्कोप नहीं है।
तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो ये नेशनल पॉलिसी की जो एक रिकमेंडेशन मेजर है, उसका मेजर रिकमेंडेशन ये है कि टीचर्स के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, स्टैग्नेशन है और जो भी दिक्कतें उनकी हैं वो प्रोग्रेशन की बहुत बड़ी हैं। और उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया वो स्टैंडर्ड्स, इस डॉक्यूमेंट्स में उन स्टैंडर्ड्स की बात की गई है जिन स्टैंडर्ड्स को, जिन मापदंडों को पार करने के बाद में उनको प्रोग्रेशन मिलेगा। और वो प्रोग्रेशन की 4 स्टेजेस उन्होंने कही। बिगनर टीचर, उसके बाद में क्या क्या नाम है, और आखिर में आएगा जो प्रोफिशिएंट टीचर, चौथी स्टेज पे। मैं इस डॉक्यूमेंट को एक चेंज टाइटल के साथ मैं समझता हूं हमारी रिकमेंडेशन ये जानी चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मिनिमम प्रोफेशनल मेरे हिसाब से इस डॉक्यूमेंट का अगर टाइटल ये कर दें तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा डॉक्यूमेंट क्या है। मिनिमम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। मैं इसको नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करता, उसके 2 रीजंस हैं। एक तो यह है कि इट डजंट कवर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स जो उनके लिए चाहिए, तो ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि ये डॉक्यूमेंट जैसे ही पास होगा और इस टाइटल के साथ पास होके जाएगा तो पब्लिक डोमेन में जाएगा, नेट पे जाएगा, वर्ल्ड वाइड लोग इसको पढ़ेंगे। इसके रेफरेंसेस को अगर आप देखेंगे तो इसके रेफरेंसेस में भी उन्होंने यूके और 2-3 कंट्रीज का नाम लिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट किया है। तो जब वो कहेंगे साहब ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भारत सरकार के, भारत के इतने कमजोर हैं, ये खाली स्कूल लेवल की बात करते हैं, तो दिस कैन नॉट बी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, दे आर मिनिमम। अच्छा, फिर क्या है स्टैंडर्ड? इज ए स्टैंडर्ड अल्टीमेट? और अगर आप अल्टीमेट स्टैंडर्ड की आप कल्पना आज कर सकते हैं तो मैं तो भाई फेलियर होऊंगा उसमें। वी कैन नॉट। स्टैंडर्ड्स आल्सो कीप ऑन चेंजिंग with times, with technological innovations, with newer ideas, with the changing perspectives. Standards keep on changing. And basically, so you cannot have straight-away standards. They are minimum standards. तो मैं तो अगर इसको और भी कहूँ, डाइल्यूट करूँ चीज को, तो इसमें उन्होंने अगर पीछे जो चार्ट बनाया है, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, बड़ी मेहनत से एक्सरसाइज की गई है। आप उसको सिस्टमेटिकली, कम से कम मेरा एक रिक्वेस्ट है एजुकेशन के स्टूडेंट से कि इसको बड़ी गहराई से पढ़ें और समझें। तो उन्होंने जो डोमेन्स ली, कोर वैल्यूज ली, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ली, दैट्स एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। इट्स अ वेरी वेरी एकेडमिक एक्सरसाइज। और मजे की बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज वंडरिंग व्हेन आई वाज started reading this, because once you start reading you find that there are many things spoken at the idealistic platform and you start imagining how these things will be implemented. But when I went to the end and saw that table where they were categorically in operational terms rather what the teacher would achieve, then go to the next, what he would do, what he would do. तो अचीवेबल टर्म्स में है, ऐसा नहीं है। देखिए अब है क्या, अभी हमारे मित्रों ने बात कही कि सैलरी, वर्कलोड, ये समस्याएं। देखो भाई, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, शाही जी को मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने बात को कहा, मैं उसको दूसरे तरीके से कहूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च हैज शोन एनी सैलरी एडवांसमेंट does not lead to bringing teacher efficiency or lead to teacher effectiveness. शाही जी ने सरल शब्दों में कहा कि अगर तनख्वाहें बराबर बढ़ी और एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स गिरे, उसका कोई कोरिलेशन नहीं। शाही जी ने एक दूसरी बात कही, एक आदर्श टीचर की। हम एजुकेशन के स्टूडेंट्स हमेशा इस बात में, और बड़ी लंबी हम लोगों ने बहस की शुरुआती दौर में, और जब भी ये आता था कि भाई
training is needed for teachers. There are people who believe that teachers are born, not made. Fine. A born teacher with all idealistic qualities, values and ethics and everything, a commitment, would not require any training. Would not. And there are many of us. There are thousands of examples which we can quote. But then, you know, India needs crores and crores of teachers. From where to bring these millions of teachers who are required to teach in schools, universities and colleges, cater to the educational aspirations of 150 crore people. So we need people. We need to set standards. And we need to come out with certain benchmarks, which we may also call standards. That these are minimum competency benchmarks, which you cross, you move to the next thing. अरे भाई आपके यूनिवर्सिटी लेवल में भी आप एग्जांपल दे रहे हो करियर एडवांसमेंट में, तो करियर एडवांसमेंट में भी कुछ तो बेंचमार्क्स लगा रखे हैं ना यूजीसी ने, ये रिफ्रेशर कोर्स करोगे तो ये करोगे तो वो करोगे, इतने पेपर पब्लिश होंगे, लगाया ना। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो 4 लेवल्स की और स्टेजेस की बात की कि करियर प्रोग्रेशन ये होगा टीचर का, और उसमें एक बिगिनर टीचर ये करेगा, उसके बाद उससे ये एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन। मैं एक दूसरी इसी बात को बिल्कुल सरल ढंग से कहता हूं, हम सभी इसमें से अधिकांश लोग टीचर्स बैठे हुए हैं। बात बड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है। हम में से आधे से ज्यादा सरकारी नौकरी एक बार पा गए, कड़वी बात है। अगर इसको मेरे को गलत साबित कर दो तो कोई भी बोल सकता है, अदरवाइज आपका साइलेंस अगर रहता है तो मैं मान लूंगा मेरी बात से आप एग्री करते हैं। हम में से आधे से ज्यादा बहुत स्ट्रगल करते हैं नौकरी पाने के लिए। नौकरी पा जाने के बाद हम में से आधे ज्यादा कंटेंट हो जाते, सेटिस्फाइड हो जाते और अपने आप को कहते हैं अरे ठीक है, करियर एडवांसमेंट तो आएगा ही, खानापूर्ति कर लो, प्रोफेसर होकर रिटायर हो ही जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ अस इवन एट हायर एजुकेशन लेवल कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फॉर प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट, जिसको वो कहते हैं कि लेक्चरर बनने के बाद आप कैरियर एडवांसमेंट से हो सकता है कि एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएं, प्रोफेसर हो जाएं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रोफेसर हो गए। हु इज अ प्रोफेसर? वन हु कैन प्रोफेस। एंड हाउ कैन यू प्रोफेस? हाउ कैन यू प्रोफेस? Who will profess? Only one can profess who has excelled in his own subject knowledge, commands research, produced some newer ideas and newer knowledge through his research, and also commands a respect of the colleagues, peer group. तो ऐसा तो होता नहीं ना। तो हम में से जब हायर एजुकेशन पे ऐसा लोग कर रहे हैं तो स्कूल एजुकेशन में, स्कूल लेवल पे कैसे होगा? तो बेसिकली अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है उन स्टैंडर्ड्स को कि कैसे टीचर को, एक बिगिनर टीचर को एंट्री पानी है विद मिनिमम लेवल्स ऑफ competencies एंड स्किल्स, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसको वो कहते हैं कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड वंस ही एंटर्स इनटू द जॉब एज अ टीचर, देन he has to grow professionally developed from a beginner teacher to the most proficient teacher or lead teacher. वो कैसे कैसे करेगा, उसके ग्रोथ की बात है, और वो कैसे करेगा उसको उन्होंने स्पेल आउट करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ minimum behavioral changes, minimum learning,
मिनिमम एडेप्टेशंस, मिनिमम जो भी वो करे उसको आप पढ़ेंगे तो वो बड़ा वेल डिफाइंड आर्टिकुलेटेड वर्क है। ऑपरेशनल टर्म्स में उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है, अचीवेबल है। और अगर आप वो करते हैं तो आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर मूव करते जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि दिस डॉक्यूमेंट इज मिनिमम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोग्रेशन ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। इसका टाइटल एक तो ये कर देना चाहिए। अब यहां पर जो बात मेरे को समझ में आती है दिक्कत, इसमें ये कहते हैं कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएगा तो उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसे होगा। शाही जी ने उसको टच किया। अब इसमें कहते हैं जो इसके लगता है या तो एनसीटीई करेगी या किसी प्रोफेशनल एजेंसी को लगाएगी, पब्लिक एजेंसी करके नाम दिया। आप पढ़िए। तो भाई इस देश में 500, 1000, 10,000 टीचर्स हो तो ऐसा किया जा सकता है। जब इस देश के पूरे स्कूल लेवल को आप जाएंगे, आपके पास करोड़ों टीचर्स का सामना होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतने आसानी से इसको कर पाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत अच्छा वेल डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट है और वो बड़ी अच्छी उसमें सिस्टम है, वो कहीं जाके जब उसको प्रैक्टिकली धरातल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए तो वो फेल ना हो जाए, फ्लॉप ना हो जाए। आप टीईटी कराते हो, टीईटी कराने के बाद में वी हैव एग्जांपल्स, बहुत कम स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने उसको सक्सेसफुली करा के और सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट करा लिए। हमारे समाज की रियलिटी एक ऐसी रियलिटी है जिस रियलिटी के अंदर बहुत सी बीमारियां बड़ी आसानी से घुस जाती हैं। आप बहुत अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सिस्टम में बनने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले जो है व्यापारी लोग लग जाते हैं और तरीके इजाद कर लेते हैं कि कैसे उसको एनकैश किया जाए। क्या इस बात की संभावना नहीं है, जैसा कि साई जी ने भी कहा, कि आज की तारीख में मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं और मेरे जितने बीएड वाले लोग बैठे हैं कान खोल कर सुन लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6, 6.5 साल बाहर रहा, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। जब आ गया तो आने के बाद में मेरे पास किसी एक मित्र वाइस चांसलर का फोन आया कि सर हम आपको अपने यहाँ जो बीएड कॉलेजेस हैं उनमें रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बड़ा गड़बड़। तो मैंने कहा कि साहब ये तो काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, और क्यों छोड़ा था उसका भी कारण था। बुलावा बहुत आता था, छोड़ इसलिए दिया था कि मुझे लगा था कि पूरे सिस्टम में भांग पड़ी हुई है। अब मेरी ये भांग पड़े होने को समझ रहे होंगे आप में से, जो लोग जाते हो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं वाइस चांसलर बनने के बाद फिर उसी भांग के कुएं में गोता लगाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे मौका दीजिए, मैं सोचता हूँ। उसके बाद मैंने अपने 2-4 यंग नौजवानों को बुलाया क्या मतलब, जब भी मिले उनसे पूछा मैंने कि भाई आजकल बीएड कॉलेजों के रिक्रूटमेंट के सिस्टम में जो 5-6 साल पहले चलता था वैसा ही है कि कुछ सुधार हुआ या और कुछ गिरावट आ गई? तो बोले कि साहब और गिरावट आ गई। तो हमने कहा वो क्या गिरावट आई? तो बोले कि पहले जब हम लोग पूर्वांचल में या कहीं भी बीएड का इंटरव्यू लेने जाते थे, विद्यापीठ में, पूर्वांचल में कहीं भी, तो कम से कम कॉलेज का मैनेजमेंट या प्रिंसिपल जो है वो मेहनत करके 15-20 अच्छे कैंडिडेट्स को लाने की कोशिश करता था। और उसमें से होता क्या था कि हम लोग थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी लेते थे और लेके जो अपॉइंटेबल लोग होते थे उन्हीं के नाम पे एग्री करते थे और रिकमेंड करते थे। तो हमने कहा भाई ये तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। तो बोले नहीं साहब अब ये भी नहीं होता। तो हमने कहा अब क्या होता है? तो अब तो उन्होंने जो प्रिंसिपल लोग हैं, मैनेजमेंट लोग हैं, वो अहमियत ही नहीं करते हैं अच्छे कैंडिडेट्स को लाने की। उसके लिए कुछ प्रोफेशनल एजेंट्स हैं जिनका पूरा का पूरा नेक्सस है, नेटवर्क है, उत्तर भारत के 4-5 राज्यों में, दक्षिण भारत का तो मुझे मालूम नहीं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और वो कुछ एजेंट्स हैं, उनकी एक निश्चित फीस है, उनके पास एक पैनल है लोगों का, उन्हीं लोगों को लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं नहीं साहब अब आप इन्हीं को कर दीजिए। और वो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लोग होते हैं, हम लोग एक्सपर्ट बन के जाते हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं होता, सब साइन करके चले आते हैं। और
हो गया काम। तो आप भाई कितना भी अच्छा सिस्टम बना लोगे, आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो आपने ले डाउन किए फॉर प्रोग्रेशन ऑफ टीचर्स, और आपने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट्स और अपने अचीवमेंट्स, अपनी जो लेसन प्लान्स और सारी की सारी चीज़ें, उसकी बात की गई है सारी चीज़ों की, वो सबमिट करेगा, उसका एक प्रॉपर असेसमेंट होगा, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट की बात है उसके अंदर। तो कुछ टीचर्स जो सिंसियर होंगे, जो ईमानदारी से होंगे, जो कमिटेड होंगे, जो प्रोफेशन को सही ढंग से परस्यू कर रहे होंगे, वो तो अपनी सारी डायरीज और लेसन प्लान्स और उन्होंने क्या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स किए, क्या चीजें उन्होंने कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, वो सबका अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे, उससे क्या लर्निंग उन्होंने की थी, उनकी लर्निंग फर्दर लर्निंग नीड्स क्या है, उनको भी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और अपने एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो सिंसियरली ग्रो करने की कोशिश करेंगे। बट दिस नंबर वुड बी वेरी लिमिटेड, जो समाज में बीमारी है। वो भी शायद हो सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स बेटर कर लें। सरकारी स्कूलों में तो जो प्राइमरी में लग गया गांव में, वो तो कभी गांव में स्कूल में जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो वहां पर भी एजेंट्स आ जाएंगे और एक बार जो है कुछ प्रोफेशनल एजेंट्स वो बना देंगे। अरे उसको छोड़ो, हम लोग बीएड में ही कहते हैं, आप लोग सब जानते हो कि इतने आपको जो असाइनमेंट्स करके देने, ये करके देना, और आप 2 साल के बाद चाहे देखते हो कि वो असाइनमेंट्स रिपीट होके वो पिछली जनरेशन वाला आगे वाली जनरेशन को कॉपी करता चला जाता है। तो you will have to really, the NCTE will have to really be advised कि how would this scheme of progression, which sounds correct, which is a very pious effort on the part of the NCTE, how would this be implemented? That needs to be thought of very rigorously. Another point, ये जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने कहा, मिनिमम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जिनको मैं कह रहा हूँ फॉर प्रोग्रेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, दिस इज फाइन, बट क्वालिटी, और अगर ऐसा इंप्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली क्वालिटी विल कम एट द स्कूल लेवल, टीचिंग लर्निंग। बट द पॉइंट इज बिगिनर टीचर, ना क्वालिटी ऑफ द बिगिनर टीचर वही तो सारी की सारी चीज को आगे प्रोग्रेशन में क्वालिटी को इंश्योर करेगी। तो मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट को लाने से पहले मिनिमम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन लाना चाहिए था, बिकॉज सारी की सारी आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये बेमानी हो जाएगी अगर आपके पास जो आर्मी ऑफ टीचर्स ब्रॉट आउट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बीएड कॉलेजेस, जो अभी हम सभी जानते हैं क्या हो रहा है, वही निकल कर आएंगे, वही कॉकस काम करेगा, वही सिंडिकेट काम करेगा, कैसे होगा? हालांकि इस डॉक्यूमेंट में भी कहीं कहा देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर इंटर रिलेटेड एंड कोरिलेटेड। इसमें एक बड़ी जो अच्छी बात उन्होंने कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके बाद जब मैंने खोल दी बातें तो अब आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो फिर और लेकर कर आएंगे। पेज नंबर 11 पे क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि बेसिकली तो क्वालिटी एश्योरेंस का मामला है, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। ना क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द टीचिंग प्रोफेशन के लिए इन्होंने 3 फैक्टर्स को माना है और बिल्कुल सही माना है, कंटेक्स्ट फैक्टर्स, प्रोसेस फैक्टर्स एंड गवर्नेंस फैक्टर। Now process factor relates to the quality of institutions, कि भाई बीएड का कॉलेज अगर एथिकली काम कर रहा है और एथिकली अच्छे साउंड टीचर्स ला रहा है, नो इशू। तो कंटेक्स्ट फैक्टर्स जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं एट देयर लेवल, दे हैव टू बी प्रोफेशनली वेरी साउंड and operating at the highest professional standards. Now comes the process factor. Process factor is the software aspect of it, कि curriculum क्या होगा, what would be the content of delivery. तो ठीक है, curriculum would be adopted and adapted from time to time as per the needs, evolving needs, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इनपुट भी लाएंगे और चीजें लाएंगे और न्यूअर आइडियाज एंड इनोवेशंस लाएंगे, न्यूअर कॉम्पिटेंसीज लाएंगे।
करिकुलम अपग्रेडेशन करेंगे, फाइन, उसके लिए नेशनल लेवल पे आप कर सकते हो, करते भी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाके हम। तो मैं मानता हूं कि उसके लिए आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ले आओगे। नाउ कम्स गवर्नेंस, हाउ टू एंश्योर that the policy, that the process adopted is what it ought to be, it should be. वहां पर हम देखते हैं you are a bitter failure, क्योंकि 10 से 11,000 बीएड कॉलेजों में कितने कॉलेजेस हैं जो कंटेक्स्ट फैक्टर्स को एथिकली इंप्लीमेंट करके प्रोफेशनल टीचर्स को पैदा कर रहे हैं। तो इफ यू डोंट एड्रेस द गवर्नेंस, if you don't address the context factors, howsoever, and you are solely dependent on the process factor. Now, process factor will be dependent and correlated to the teacher educators. Now, teacher educators also coming from that fieldy system. भाई BHU का एमएड डिपार्टमेंट या कहीं और का सेलेक्टेड एमएड डिपार्टमेंट से टीचर एजुकेटर निकल के आए, बात अलग है। लेकिन जब उसी बीएड कॉलेज में और उन्हीं प्राइवेट बीएड वहीं से एमएड भी लेकर आ रहे हैं कि नेवर सीन द क्लास एंड गॉट अ एमएड डिग्री एंड बिकम द टीचर एजुकेटर। So while minimum professional standards for the progression of school, progression of the teachers in the schools, working in the schools, this document is very high sounding, very high sounding, acceptable. Its implementation and the expected outcomes of this document, वो कैसे होंगी? This needs to be worked out very meticulously. Otherwise, this is an idealistic document, which will also remain as an idealistic document. Maybe that some changes at the BEd level accordingly would be done, but with what outcome, at least I am not sure. Now, with these words, I open the discussion to the House. Your reactions, your suggestions, your observations, if any, are welcome, that because we have to send our feedback. That's very important. I'll request somebody to take the mic. Go ahead. Hello, sir. I want to share a couple of my concerns regarding this draft when I have gone through this. The number one is when we talk about the national education policy itself, which was drafted in 2022, which was pre-pandemic. And now we are having the discussion of all these issues in the post-pandemic era, when not only the fabric of the classroom, but even the duties of the teachers also have changed. So my humble submission will be, one of the concerns is that, is there or should there be a crisis management, format for the teachers, which can take care of the rights and the duties of the teachers during any future crisis of such nature, which we know that is going to be imminent, and with the waves it's going to come back again and again. A. B, I am a little bit concerned about this issue that when we talk about a national draft, which given to the diversity, the multilingual, the multicultural, the geographical location, the gender roles, the diversity in the classroom, the language issues on such a broad country like India, are we not somewhere undermining the heterogeneity of the nation by homogenizing a framework like this? Will we be losing somewhere there? I mean, looking at the different states, even the school which is located at a very distant area, right? The problems and the issues will be different. So how do we cope with and manage and bring a fine balance between the heterogeneity of the nation and education system and the homogeneity of that? And one more concern which I wanted to share was that when we talk about, I went through this policy, and what I felt was, you guys are absolutely correct when we are saying that, yes, we want to go back to the old great Nalanda and all that tradition. And we have put certain ideas and the frameworks on the paper.
what I find is there a inherent contradiction, or it's only me who is finding this, that one side we are saying that we want to have a new role of a teacher, new aspirations, and at the same time we are putting something where we want to go back, and it's the same thing which what basically I'm asking, what is new in this? I'm trying to put my finger on that what is new? We have always been trying to talk about the ethics and the issues and the roles and the promotions. Yes, back then it was different. Now with the technological role, ICT, it's different. So I was just trying to understand, when we talk about new things, I'm not belittling the value of the ingenuity which is there, which is really appreciable. But I was just trying to understand. And one suggestion I was to give, sir, because I come from a higher education institute and I'm a member of IQAC, I would like to say that can we put give a role and earmark an institution which can be even NCTE in this role, which can work like an IQAC cell to have not the 5-year or 3-year plans, but an yearly visit to the institutions, not to terrorize the group, right? Not to assess them, but to help them, so that the implementation of such a big thing can be decentralized and we can have a look at that in implementation. Thank you so much. May I please be introduced to you? Sir, my name is Mahesh Sharma and I teach in the English department at Center Institute of Higher Tibetan Studies, Sarna. Although it's not an opportunity where I should react, because we are seeking your feedback. But the diversity issue has been issued. It is also addressed and expressed in the national policy. Nowhere the national policy document wants you to take you to Nalanda and those ages. When we talk, national policy talks of holistic development, it simply gives you an example in terms of Nalanda, Takshila and the olden days history, where our universities particularly in those times, in fact, it would not be wrong that India gave the concept of university through Nalanda and Takshila to the whole world. So that's a glory. And quoting that glory, the expectation of the national policy on education is that if not all, at least some of our Indian universities should achieve that glory and become world-class institutions, attracting the best talent not only from the country, but scholars from abroad also. So let us please not try to mix that with the policy wants you to regress back. No forward-looking society would regress back. Be clear. It's only a matter of interpretation by different people, diversified groups. Your suggestion pertaining to this diversity would be put in again, because I also personally feel that tackling diversity is a very different challenge in the class. It's a very different challenge in the class. Although the policy says even you have to tackle the multilingualism of a class also. But then we teacher educators who are supposed to produce prospective school teachers will have to really research about it and look into how diversities can be tackled, although we do something for that. Some adaptive mechanisms are required. Basically, if you tackle the diversity of a class in a heterogeneity group only through acceptance. Now, education for the first time is not conceived as something giving. It's not a dictum. It's child-centered. It is bringing him out. And once you give an opportunity to everyone in the class to bring out what is inside, and then bring on the platform, the process itself tackles the diversity. You try it in your class. The process in itself. The only thing is the teacher must know how to process it.
Maybe in your IQS you invite me, I'll give you a lecture on diversity and how to tackle diversity in your class. Huh? Okay, and I would love to do it. I'm a retired person. यही सब करना है. हमको बुलाइएगा, हम उसको concept create कर देंगे. Thank you very much. But your ideas are very fine. Yeah, you wanted to say that. नमस्कार, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति हिंदी से। बहुत सारी बातें आपने कह दी। मैं डॉक्टर महेश शर्मा के प्रश्नों के बाद ही कुछ कहना चाह रहा था, जो नालंदा और विश्व भ्रमण की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम जब विश्व भ्रमण की बात करते हैं और अपनी बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं, वहां हमें पुनः पुनः सोचने की आवश्यकता है। छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का संरक्षक हूं। मेरे प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी भी यहाँ हैं। कल अंग्रेजी विभाग का एक विद्यार्थी, एक मेल का इशू था, उसके संबंध में बात करने हमारे पास आया। हमारे प्रशासनिक संरक्षक उसको कुछ समझा रहे थे और यह भी उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी आगे बढ़ना है, पढ़ाई करोगे, नौकरी भी लेनी है, तो तुम अपने इस आचरण को, अंकित कुमार उसका नाम है, यह भी बता दूंगा, क्योंकि वो अंग्रेजी विभाग से ही है, इसीलिए भी मैं कहना चाहूंगा। और साई सर ने अभी जिस एथिक्स और नैतिक मूल्यों की बात की, इस परिप्रेक्ष्य में ही है यह कहना चाह रहा हूं। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, मैं नौकरी भी ले लूंगा। बात छोटी सी है, वाक्य छोटा सा है, लेकिन उसके व्यक्तित्व की पूरी झलक उसमें मिल जाती है कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या बनना चाहता है, कैसे बनना चाहता है। हमें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, हिंदी डिपार्टमेंट BHU से। सर, डॉक्टर ज्योति ने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं, उनसे सहमति जताते हुए मैं कुछ इसी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हम एक तरफ सांस्कृतिक उन्नति, राष्ट्रीय दायित्व और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या इन सभी चीजों की उन्नति के साथ साथ कहीं हम भारतीय भाषाओं के उन्नति को भी सम्मिलित कर रहे हैं या उसको हमने छोड़ दिया है? इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी पहचान अपनी भाषाओं के साथ जारी रखनी है। उनसे कट करके इसकी बात करना मुझे लगता है कि बेमानी है। एक और बात इससे अलग, हमारे देश में प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है उससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यालय जिनमें प्राथमिक सुविधाएं ही नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों में जो खिचड़ी और चावल के बूते पर चलाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या पहले उनमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है? उसके बाद शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षक की प्रोन्नति के साथ साथ छात्र की उन्नति, उन दोनों के समन्वय पर बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पर कुछ कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार, विनोद कुमार सिंह, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। NEP की लाइट में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के विषय में NCTE का बहुत अच्छा प्रयास है। कम से कम एज ए होल सोचने की एक दिशा में काम हो रहा है। स्कूल एजुकेशन में हमारे पास PRT, TGT, PGT है और इस ड्राफ्ट में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है किसको कैसे करेंगे इसमें भी थोड़ा और क्लियरिटी की जरूरत है कि तीनों का लेवल क्या होगा, रैंकिंग क्या होगा, क्वालिफिकेशन होगा और कितना सैलरी बढ़ाएंगे, कितने एक्सपीरियंसेज होंगे, क्या टास्क दिया जाएगा थोड़ा सब्जेक्टिविटी है तो इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत है। और कुछ ऐसा भी ना हो जाए कि टीचर बहुत भयभीत हो जाए कि वह अपने प्रमोशन के लिए परेशान हो, टीचिंग सफर की जाए तो जो भी उसमें चीजें रखी जाए तो टीचिंग लर्निंग आउटकम से जोड़ की बातें रखी जाए, जिससे मेन फोकस स्कूल का लर्निंग आउटकम हो और वो कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों पक्षों को लेकर कवर करे, जिससे बाकी गतिविधियों में भी सम्मिलित रह जाए। और बाकी दिक्कतें बहुत सी हैं, लेकिन पहले टीचर की को NEP फोकस कर रही है उस पॉइंट पे, उसी को लेकर के ड्राफ्ट बनाया गया है और उसमें निश्चित रूप से मेंटरिंग भी
अच्छा प्रयास होगा। फिनलैंड की बात की गई है मेंटरिंग में, तो हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेटर्स हैं, दे विल आल्सो असिस्ट इन दिस सिस्टम, जो है उनका एक बहुत बड़ा हब हो जाएगा। और निश्चित रूप से इस उम्मीद कर सकते हैं कि हम स्कूल एजुकेशन को भारत में अच्छा कर सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर भी हम आगे जा सकते हैं। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का जो नवा युवक जो हो रहा है, युवक युवतियां निकल रहे एजुकेशन सिस्टम से, जो है वो पैकेज की बात कर रहे हैं, और ये ड्राफ्ट भी सजेस्ट कर रहा है कि हम स्कूल टीचर की सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हम इस दिशा में भी रिकमेंडेशन ले, जो है कि निश्चित रूप से टीचर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और हाई पैकेज अगर उसको हम रखते हैं, जो है तो इसके तरफ लोग आकर्षित होंगे। जो है आज IITians जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाह रहा है, MBBS डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा है। नहीं सर, सैलरी अगर हम जी, हाँ एक सेकंड, इसको मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जी, इसकी बात को मैं आपको नकार दूंगा। अच्छा, और दूसरी चीज सर कि आज प्राइमरी में हमारे MAd PhD होल्डर भी जा रहे हैं, तो अगर उनको हम कुछ इंसेंटिव देते हैं, जो है तो वो वहां अच्छा कर सकते हैं। जो है नहीं, पहले आदमी रोजगार अरे ये ले जाओ, ये ले जाओ। हेलो हेलो, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को साधुवाद देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पे इस डिस्कशन को रखा है। 2015 में पॉलिसी, क्योंकि बार-बार बहुत सारे लोग गलत उच्चारण भी कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये हम अपने में सुधार कर लेंगे तो अच्छा होगा, और यही समझे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत 2015 में हुई और 2020 5 साल के कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में ये 5 साल के अथक प्रयासों से लगभग 2.5 लाख से, सर भी कई बार उस कमेटी के लोगों से मिलना जुलना रहा है, प्रोफेसर राठौर सर का, और उस 5 साल के इस अथक प्रयास से एक हिंदी में 107 पेज और अंग्रेजी में 66 पेजों का ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ, जिसमें बीज बिंदु के रूप में बहुत सारी बातें रखी गई हैं, लेकिन उसको विस्तृत रूप से समझने और समझाने और उसको व्यवहार में लाने का जो दायित्व है वो हम शिक्षकों के ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, सर ने उसको अच्छे तरीके से रखा कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जो हम बैक जाने की बात हो रही है, निश्चित रूप से हमें अतीत की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली उस समय भारत की जो शैक्षिक दर थी वो 18% थी। जिस समय अंग्रेजों से गुलामी मिली, अंग्रेजों ने 200 साल पहले अगर चले जाएं तो उस समय 90% से अधिक शैक्षिक दर थी। हम कौन सी शिक्षा पद्धति को अपनाए, कौन सी शिक्षा प्रणाली को अपनाए कि हम 96% से 18% पे आ गए, और आज जो शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा को लेने के बाद हमारे पास जब विद्यार्थी आता है तो
उस विद्यार्थी का भाव क्या होता है, भंगिमा क्या होती है, वाणी क्या होती है, भाषा क्या होता है, उसको हम पूरी तरह से सारे शिक्षक अनुभव करते हैं। एक छोटा सा अशोक ज्योति जी ने उदाहरण दिया, ऐसा एक दिन की बात नहीं है, हर दिन शिक्षकों को सामना करना पड़ता है। इसके पीछे की कारण क्या है, उस पे हमको विचार करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये जो 107 और 66 पेज का जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को ठीक प्रकार से हम लोग अगर अध्ययन करके और उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे विचार करें तो निश्चित रूप से इसका समाधान मिलेगा। लेकिन उस अतीत की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ने पे हमको उसका समाधान मिलेगा, तभी भारतीय शिक्षा का विकास होगा और भारत के अनुकूल होगा। जैसा कि एक विष्णु पुराण का एक श्लोक है कि तत्कर्म येन बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्या न्याशिल्प नैपुणम। ये विद्या जो है, तत्कर्म येन बंधाय, जो कर्म वही है जो हमें बंधन से मुक्त करे, और विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। तो मुक्ति किस तरह से हम चाहते हैं, डॉक्टर विनोद जी अभी बात कर रहे थे कि शिक्षक जो प्राइमरी एजुकेशन में जा रहा है हाई मेरिट लेकर, उसको हमें इंसेंटिव देना चाहिए। वो प्राइमरी स्कूल में उद्देश्य से लेके नहीं जा रहा कि मुझे प्राइमरी टीचिंग करनी है, वो एक्सीडेंटल प्राइमरी टीचर बन रहा है। तो क्या हम एक्सीडेंटल टीचर को, या प्राइमरी एजुकेशन में हो या हायर एजुकेशन में हो, इस तरह के टीचर को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए? एक्सीडेंटल टीचर बनाना है या टीचर बनाना है, इसमें विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। Hello. This is Dr. Alok Gadia from Faculty of Education. So, sir, I will speak on mostly national professional standards. So, if we are to discuss here professional standards, so it means we are now taking teaching as a profession. In modern world, earlier in ancient time, definitely it is a high regarded and noble job. Even today it is. But now it has also become an established profession with established hierarchy system. There is a PRT, there is a TGT, and there is a PGT. So this particular document speaks on defining such professional criteria which will give a scientific base for progression in the different levels of school education. So why, what, how, and who of professional standards, I think we should discuss. So when we say why of professional standards, definitely it is an acceptance that now teaching has become a profession in terms of certain post, in terms of defined progression. So why? Because it is a profession. What we have rich cultural heritage, what to evaluate. We have professional standards, what to evaluate. And this document has very excellently spelled out what should be evaluated for the teachers. So these two parts are very clear. But where does the need of discussion lies? That is how to evaluate and who will evaluate. So this is the scope for discussion, how to evaluate and who will evaluate. So this part, how, is definitely very difficult, which sir you also told, that if Sahi sir told that devotion, how we can evaluate whether teacher is devoted or not. If values are there, constitutional values are there, we can measure subject knowledge, we can assess communication skill, but how we will measure value part? So this is something, there is a very good scope of discussion. Since we belong to teacher education discipline, there is a concept of student evaluation of teachers, that how when students evaluate teachers, they have, it has its own challenges and shortcomings. If I quote some research finding, जो स्टूडेंट इवेल्युएशन है वो जेंडर से प्रभावित होती हैं, हायरार्की से प्रभावित होती हैं, टीचर के रीजनल बैकग्राउंड से प्रभावित होती हैं।
तो स्टूडेंट भी एक कॉम्पिटेंट इवेलुएटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो वी हैव टू चाक डाउन सच स्ट्रेटजी जहां हम टीचर के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को इन टोटलिटी हम इवेलुएट कर सकें. सो वी हैव टू डिस्कस ऑन हाउ एंड हु. तो हु में आई थिंक देयर शुड बी होलिस्टिक इवेलुएशन. The head of the institution should evaluate, the student should evaluate, and some other mechanism where we can assess other parts of professional standards. So, since this document belongs to school education, school teachers, और स्कूल टीचिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं. जो स्थिति एपीआई की हो गई हायर एजुकेशन में, किस तरह से मशरूमिंग ऑफ फेक पब्लिशर्स हो गया और लोग जो है उन क्राइटेरियाज को ज़्यादा देखने लगे, बही खाता लेकर के मेरे कितने नंबर हुए कितने नहीं हुए. आर वी लीडिंग स्कूल टीचर इन द सेम डायरेक्शन कि हम उनको दे दें, वो देखने लगें कि मेरे इसमें नंबर हो गए, उसमें नंबर हो गए, इसमें हो गया और अब मैं आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ क्या? ओवरलुकिंग देयर रियल परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम. ये सारे चैलेंजेस हैं जिसका जवाब शायद हमको ढूंढना चाहिए और इस दिशा में कुछ साइंटिफिक प्रोसेस इवॉल्व करें जिससे कि अधिक ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन के चांसेस कम हो और हम एक कॉम्पिटेंट और बेस्ट टीचर अपनी कंट्री को दे सकें. थैंक यू. Good afternoon, everyone. I am Dr. Akanksha Gupta from Department of Statistics, BHU. सर, अभी हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स. आपने अपने टॉक में शुरू में कहा था कि यहाँ पे टीचर्स के ग्रीवांसेस को भी हम डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली साई सर ने जो कहा कि अब टीचर्स उस तरीके से टीचिंग को नहीं लेते जैसे पहले गुरु लिया करते थे. आई एग्री विद. लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है. जब गुरु हुआ करते थे तो उनके पास बाकी चीज़ें सोचने के लिए नहीं था कि उन्हें एपीआई मेंटेन करना है या कुछ, बहुत सारी चीज़ें अभी सर ने बोल दी थी. मेरा पॉइंट ये है सर, अगर स्कूल टीचिंग की बात करें तो स्कूल टीचर्स अब जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आ रहे हैं. मैं ये नहीं कहूँगी वो बीएड में क्या पढ़ के आए, वो एग्जाम्स क्वालिफाई करके आ रहे हैं. दे आर केपेबल ऑफ टीचिंग, आई थिंक सो. लेकिन वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं उसके बाद वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि कैसे अपनी सैलरी निकलवाएं, किस तरीके से अपनी छुट्टियां सैंक्शन करवाएं, किसको कितनी घूस दें, वो इनमें फंस जाते हैं. अगर इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो वो अपना पूरा ध्यान टीचिंग की तरफ लगाते हैं. ये तो हुई सर स्कूल टीचिंग की बात. इसके बाद ये शायद इस डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है कि अबाउट हायर टीचिंग. हायर टीचिंग में मैं खुद हूँ तो मैं जो चीज़ें फेस कर रही हूँ कि हर चीज़ के लिए हमको जो ऑटोमेटाइजेशन होना चाहिए चीज़ों का, कि आपका प्रमोशन है, आपको इंक्रीमेंट मिलने, ये चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चाहिए. हमको इसको लेके पेपर वर्क करना पड़ता है 6 महीने 8 महीने, उसी में हम लोग व्यस्त रहते हैं. तो बजाय टीचिंग करने के हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं. हमको सैलरी हाई नहीं चाहिए. सैलरी जो मिल रही है वो हमें पता है और तभी हमने ज्वाइन किया है, ये जानते हुए कि इस सैलरी के साथ हम अपनी जॉब कर सकते हैं. तो सैलरी की बजाय हम ये चाहते हैं कि जो और चीज़ें हैं जो हमको ऑटोमेटिकली मिल जानी चाहिए, उनके लिए हमें लड़ाई न करनी पड़े. हम टीचिंग पे फोकस करें, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे. दैट इज ऑल. आप सभी को मेरा नमस्कार. सर, मैं अभी मेरे मोबाइल पे भी मेल पे भी सारे ये आप जो रीड कर रहे हैं वो है. सर, उसमें पेज नंबर 48 to 50 विथ एग्जाम्पल शो किए गए हैं कि किस तरह से बिगनर टीचर्स से हम लीड टीचर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे. वो शो कर रहा है फॉर द स्कूल टीचर कि एक 2 एग्जाम्पल है पिंटू का और एक लड़की जो है उसका एग्जाम्पल है, जिसमें उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हुए एनसीटीई के पोर्टल पे अपडेट किया और अपडेट करने के बाद एनसीटीई के अधिकारी या एग्रेडेशन कोई कंपनी है तो वो उसे अप्रूव करके आगे बढ़ाएगी. मेरा सजेशन है सर कि हम हायर एजुकेशन में हैं, हम कैस के थ्रू तो आगे प्रमोट होते हैं, पर जो अभी रचना मैम ने 2 पॉइंट उठाया था कि हमारी एफिशिएंसी जरूरी है या हमारा
आगे का एक जो टाइम टेन्योर बिता के हम आगे बढ़ते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए भी मेरा सर ये सुझाव है कि हम 2 फॉर्मेट यूज करें, फ्रॉम बिगनर टीचर्स टू लीड टीचर। हम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके एनसीटी के पोर्टल पे अपलोड करें और वहां से हमें अलग एक टैग मिले कि आप लीड टीचर हो चुके हैं, आप प्रोफेशनल टीचर हो चुके हैं, और एक अलग टैग मिले कैस के थ्रू कि आप असिस्टेंट हो गए और एसोसिएट हो गए। तब जब एक स्टेटस पे हमें 2 टैगिंग अगर मिलेगी तो हमारा काम करने का जो उत्साह होगा वो और बढ़ेगा आगे, और इस तरह से हम और अच्छा कर सकेंगे। मेरा ये सजेशन है सर। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से हूँ, आर्य महिला पीजी कॉलेज से। थैंक यू मैम। Respected dignitaries on the dais and my fellow participants. I am Dr. Annapurna Dikshit, Assistant Professor in the Department of Economics, Arya Mahila PG College, Varanasi. So I will put my observation over here, that it has been said by Shahi sir that by increasing the salary, you cannot increase the efficiency of a teacher. I do agree with that. I have, as a citizen, as a parent, I have found that we like to send our kids in public school, in missionary school. Why we don't like to send our school in government colleges or schools? Because we have seen the performance of missionary schools and public schools. A teacher is very sincere, very devoted when he or she is working in a private school. But whenever he or she gets job, he is totally insincere because he is secure that I have got a government job. I need not to put effort because once I have got job, there is no scope for promotion and no incentive further. So he is satisfied, he or she is satisfied. So my question is that by only increasing by salary can we improve the performance of teacher, or we need to have monitoring system over that? Time to time there must be monitoring system. And as I belong to higher education, I am assistant professor, and here we are having under pressure that whether I am having publication in Scopus listed journal or UGC listed journal or not. So in that case, what happens? Our classes these things are ignored somehow. So we should not be forced to do that. There must be certain criteria, and I do agree with that. But यदि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ लेकिन वो मेरी क्राइटेरिया नहीं होगा प्रमोशन के लिए, प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा कि मेरा एपीआई फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो एवरीवन इज रनिंग इन द रेस ऑफ एपीआई. हाउ टू कलेक्ट एपीआई? थैंक यू. प्लीज कमेंट ऑन दिस. थैंक यू. Myself, Dr. Anita Singh, Arya Mahila PG College. So I would like to make a humble submission towards the direction of quality assurance. One thing that we all overlook is that the university teachers or college teachers or school teachers, in national education policy, they have dismantled the discipline boundaries. Similarly, we can also make this education system more inclusive by making the mobility more possible, like making it more inclusive. What I am indicating towards is, like, university teachers can deliver lecture at school level. B teachers can deliver in CHS. This kind of mobility should be there. And if API score is there, teachers would be encouraged to do this. Otherwise, we will not. Same kind of vice versa things. School teachers, if they are efficient, they have degrees, they have expertise, they should be given avenues and opportunities to have some kind of scope. Like we do have provisions for faculty exchange, but even I am an IQC member. I have observed that it is a weak structure which is not full, like it is not adopted in a very full-fledged manner. We can go, like in this document, we can have a submission of suggestions like this, that there should be no stigma attached to a teacher of university cadre delivering a lecture in school level. If we encourage such things, I think the students of schools would get more inspired by listening to a university teacher, and it should be vice versa. If a school teacher is delivering at a university level, this the same kind of platform he or she should get. This is all. Thank you.
आप सभी को नमस्कार। मैं सीमा सिंह सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से एज ए स्कूल टीचर मैं अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ रखना चाहूँगी। बहुत सारे सीनियर्स ने, गार्डिया सर ने, शाही सर ने उन पॉइंट्स को इंडिकेट भी किया, उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं जैसे यहाँ बैठी अभी हम लोग के डिस्कशन के लिए मैंने अपना पहला पॉइंट ही यही लिखा था कि हु विल असेस। पहला पॉइंट मेरे दिमाग में यही आया कि सारा असेसमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे चल रहा है, सारा डिस्कशन उसी पर चल रहा है एनपीएसटी पर, लेकिन ये असेसमेंट कौन करेगा और व्हाट वाज द मेथड, मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी असेस, किस तरीके से हम असेसमेंट करने जा रहे हैं। जैसे अभी बात हुई कि हाँ हम बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह कर लें, एपीआई कोर्स की बात अभी की गई, तो हम स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग कोर्सेज भी अगर आपने बोला ठीक है हम वो भी कलेक्ट कर लेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन की बात जाती है, बहुत कुछ उसमें होता भी है। हाँ ट्रेनिंग कोर्सेज में हम काफी चीजें सीखते भी हैं, लेकिन जैसे ही ये नंबरिंग की बात हो जाएगी तो फिर वो बोर्ड एक शुरू हो जाती है स्कोरिंग की, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ कोर्सेज भी कर लेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल जो असेसमेंट की बात है उसमें जो पॉइंट होना चाहिए वो ये कि उस ट्रेनिंग कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन हम क्लासरूम टीचिंग में कैसे कर रहे हैं, या सिर्फ हमने अपने पॉइंट्स कलेक्ट कर रखे हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज कलेक्ट करके रखे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हम असेसमेंट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पर होना चाहिए वो कि हमारे क्लासरूम में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिएक्शन कैसा है, हमें उनसे रिस्पॉन्स लेना चाहिए टीचर्स को लेकर के। बाकी सारा जो भी असेसमेंट होता है वो अपनी जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन का असेसमेंट अपनी जगह है, लेकिन शिक्षक का एक मुख्य जो दायित्व होता है, जो कार्य होता है वो टुवर्ड्स स्टूडेंट्स होता है, और हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे अच्छी जो होती है मैं कहूँगी वो हमारी स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो सबसे अच्छा हमारा अगर कोई असेसमेंट कर सकता है तो वो हमारे विद्यार्थी करते हैं, मुझे जहां तक लगता है। तो यहाँ पर जो कुछ बातें हो रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कि हाँ हमें ट्रेनिंग कोर्सेज भी करने की जरूरत है, और वो डिफरेंट स्टेजेस बताए जा रहे हैं कि हमसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, वो सारी चीजें हमें असेस कौन करेगा, हमें कौन बताएगा ये चीजें कि टीचर ने ये चीज क्लासरूम में फॉलो की या नहीं की। वो हमारा स्टूडेंट ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। बाहर के कोई एजेंसी आप लगा देंगे, वो क्लासरूम में एक टीचर बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है, किस तरीके से अपने लेक्चर को डिलीवर करता है। और उसके अलावा एक चीज और है सर कि यहाँ पर मेंटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 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 एक और पॉइंट मेरा है, जैसे अभी एक मैम ने बात रखी थी कि टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसे अपना काम करते हैं, प्रशासन अपना काम अगर करे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, बीएचयू प्रशासन के भी लोग होंगे यहाँ पर। तो मेरा अपना पॉइंट ये है कि एज अ स्कूल टीचर, एज अ सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल टीचर, हम लोग अभी भी ऑन पेपर स्कूल टीचर भी डेजिग्नेटेड नहीं किए जाते हैं। तो ये किस तरीके की दुविधा है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो हम लोग नॉन टीचिंग में यहाँ पर आते हैं। सर मैं जानती हूँ ये आप लोगों के वश, पता नहीं किसके वश में, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारा ग्रीवांस है। तो मुझे इस फोरम पे ये मुझे लगा कि हम शायद रख सकते हैं कि टीचर्स के ये भी दुविधाएं हैं। एक जो डिप्रेशन का कारण बताया जा रहा था, जो स्ट्रेस का। ओके सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। मगर मेरा जो पॉइंट था वो तो मैं एज अ स्कूल टीचर रखूंगी। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को नमस्कार। मैं स्नेहलता सिंह जी, स्नेहलता सिंह, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। मैडम ने जो कहा सर, जी मैडम ने जो कहा उसी में हम जोड़ना चाह रहे हैं। टीचर्स के असेसमेंट के ही सारे सेशन चल रहा है, लेकिन यहीं से अभी हमें जो बातें निकल के आई, हमारे बीच में से ही कुछ लोग जाके असेसमेंट टीम में बनेंगे। एक बात आई कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अच्छा कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से। दूसरी बात आई एक्सीडेंटल टीचर और रियल टीचर। ये असेसमेंट यदि हमारे बीच से आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो आगे असेसमेंट होने वाला है उसमें व्यवधान डालेगा। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो डिफरेंशिएट किया जाता रहा है हमारे समाज में, उसके लिए सर हम इंश्योर करना चाहते हैं एज अ गवर्नमेंट टीचर, हम लोग सर अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन आउटकम जो आता है वो हमारे रिसोर्सेज के कारण आता है। छोटा सा एग्जांपल, अभी कोविड वैक्सीनेशन होना था, सारे स्कूल को एक साथ गाइडलाइन गई। सर प्राइवेट स्कूल्स के पास रिसोर्सेज हैं, हर एक स्कूल बच्चे का पोर्टफोलियो बना हुआ है, एक क्लिक पे सारे गार्जियंस के पास मैसेज पहुंच गए।
गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं सर, उनके पास उतने रिच रिसोर्सेज नहीं है, और जिस कारण से हमारे जो आउटकम्स होते हैं सर वो स्टेप वाइज बाहर आ पाते हैं। तो इसको हमारी कमी ना मानी जाए, और सर असेसमेंट के समय इन बातों का ध्यान ना रखा जाए। सर सादर प्रणाम एवं चरण स्पर्श। सर मैं शोध छात्र शिक्षा संकाय कमच्छा BHU। सर मेरे दिमाग में जब से मैं हायर एजुकेशन में आया तब से 2-3 चीजें सर चलती है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी संबंधित है। सर पहला चीज कि करिकुलम डेवलपमेंट। जब करिकुलम डेवलपमेंट का प्रक्रिया चलता है तो भारत के हर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों न कर दिया कि जो करिकुलम है सेम हो जाए, कि हर बच्चा जब हर यूनिवर्सिटी से एक जगह जाता है जॉब के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर्स के लिए, तो उस जो सिलेबस पढ़ा उसके अनुसार वो एग्जाम देगा। तो सर क्यों ना, और उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस भी उसी तरह की चलेगी। तो कोई पूर्वांचल विश्वविद्यालय से आया स्टूडेंट, कोई विद्यापीठ से, कोई BHU से, कोई राजस्थान से, फिर भी सर उनके जो पढ़ेंगे उस तरह की थिंकिंग चलेगी और सबको सेम एक प्लेटफॉर्म पे मिलना है। तो क्यों ना सर ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इस तरह के करिकुलम को डेवलप किया जाए जिससे कि सबके अंदर थिंकिंग पावर एक जैसी हो, अर्थात एक करिकुलम। एक सर बात। सेकेंड चीज सर कि अभी CUCET जो कि पूरे भारत की 14 यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम होने की प्रक्रिया अभी इस समय UGC ने शायद गाइडलाइन किया है कि उसके थ्रू रिसर्च स्कॉलर्स को भी दिया जाएगा या अन्य कोर्सेज के लिए भी सर। लेकिन उनका लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश मीडियम। तो क्या सर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या फिर अन्य मीडियम के बच्चे हैं, क्या इंग्लिश मीडियम जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सर, क्योंकि सर मैंने सर रिसर्च का पेपर दिया तो ओके सॉरी सर, ओके सर। तो सर ऐसा नहीं तो सर अच्छी बात है सर, मैं अनकॉन्शियस सर, लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट तो सर एक सर रिक्वेस्ट है सर, आप थोड़ा सा बताइए। ओके थैंक यू। जो प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो B.Ed 4 years होने जा रहा है, चाहे फिजिकल 3 or 4 years, उसके अंदर एग्जिट सिस्टम दिया है। फर्स्ट ईयर के बाद वो एग्जिट कर सकता है क्रेडिट, अपने क्रेडिट को लेकर अटेंडेंस से पॉइंट, और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके वो एडमिशन ले सकता है, 1 साल सर्विस भी कर सकता है, फिर वो 2 साल बाद आके फिर दोबारा पढ़ सकता है। ऐसे उन्होंने डिवाइड करके पढ़िए। Good afternoon, sir and ma'am, and good afternoon, everyone. Sir, I'm Dr. Pooja Singh from Central Hindu Girls School. Sir, my question is, or rather my problem is that in NPST, we are only talking about, motivation and frustration of PRD teachers. What about PGT teachers? Okay, sir. But nothing has been written or nothing has been done for PGT teachers. For next 30-35 years, they are going to remain on the same post without any incentive. Okay, sir. Thank you, sir. And the next statement, sir, which is written on the very first page, promotions and salary increase will not only occur based on the length of tenure or seniority, but on the basis of such appraisal to exchange, learning, best practices, etc. But sir, what I want to say is, sometime many senior teachers are going to suffer because only half of the sentence will be taken, will be catch up, and it will be materialized in order to, confront their students. Okay. Thank you, sir. आप सभी को नमस्कार। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोद यादव, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। सर मेरा एक हम्बल सजेशन है कि जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, सभी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। आई एम बीइंग ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एजुकेशन। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सारे सब्जेक्ट्स की, लेकिन जब हम फिजिकल एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम बहुत ही प्राउडली बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही एक माध्यम है। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर सर प्राइमरी लेवल में रिक्रूटमेंट उनका होना चाहिए। कोचेस जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में उनकी सर्विसेज बंद ना की जाए, उनको उनकी सर्विसेज चालू रखी जाए। और टीचर
स्टूडेंट्स रेशियो होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में पहली बात तो टीचर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन टीचर कोचेस, ये होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Thank you very much for all your queries, questions, feedback, reactions. I request Professor Duraiya, he wants to speak something, and we are told that we don't have much time now. The next session will start. देखिए, मैं 2-3 चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, स्पेशली आई स्टार्ट फ्रॉम शाही जी। जब टीचिंग इज ए प्रोफेशन नाउ, अगर प्रोफेशन है तो लाइक अदर आईटीएंस, मेडिकल स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, टीचर का भी हक है कि उसको अच्छी हैंडसम सैलरी मिले। हम जब एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स टू वे होता है। व्हेन वी एक्सपेक्ट कि अब मेरा स्टूडेंट उसको फॉलो करे, तो वी मस्ट प्रेजेंट आवरसेल्फ आल्सो कि ही मस्ट फॉलो अस। थर्ड थिंग, अप्रूवल ऑफ द कॉलेजेस। हम बात करते हैं कि बीएड कॉलेज या बीपीएड कॉलेजेस जहां पे फैसिलिटीज नहीं है, क्लासें नहीं होती, जीरो अटेंडेंस पे उनके अटेंडेंस बना के उनको प्रोफेशनली उतार दिया जाता है मार्केट के अंदर। उसका अप्रूवल कौन देता है? एनसीटी। एनसीटी हैज टू टेक केयर ऑफ इट कि किस प्रकार से वो इस तरह की चीजें, कि मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं अपना पर्सनली, और हमने उस कॉलेज को बंद कराया। जब बंद कराया तो एनसीटी की तरफ से हमारी फाइल को हटा के जयपुर से हुआ था ये, और दूसरे लोगों को भेज के वो अप्रूवल दिया गया। ट्रक, मैं एक दिन अपने दोस्त के चला गया, मैं उस टीम में था, मैं वहां रुक गया, पास के गांव दूसरे शहर में चला गया, लौटते उसी जगह से निकला अगले दिन, तो उस कॉलेज के सारा सामान ट्रकों में लद रहा था दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे सोफा हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे फर्नीचर हो। मैंने पूरी पिक्चर उतारी, मैंने वहां जमा की, हमने उस कॉलेज को बैन ही नहीं किया, बंद करने की बात कर दी। इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, और हम पे जयपुर वाले जो नॉर्दर्न रीजन का जो उनका वो था, वेस्टर्न रीजन का जो सेंटर, उन्होंने हमारी टीम को हटा के एक दूसरी टीम को 15 दिन भेज के उनको अप्रूवल दिया। तो ये हमको खुद को इवेल्युएट करने की जरूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड्स, इट शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। ये नहीं हो चाहिए कि इनके लिए स्टैंडर्ड दूसरे, मेरे लिए स्टैंडर्ड दूसरे, इनके लिए स्टैंडर्ड दूसरे। आपको ये भी बता दूं, अभी तक हमने इतनी बात की, एक को छोड़ के किसी ने फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं की। मैं उस यूनिवर्सिटी को आता हूं जो इंडिया में ओनली यूनिवर्सिटी जो A++ लेके बैठी है नेक में, जिसके टीचर फ्रॉम रात 6 o'clock, जो हमारा डिपार्टमेंट भी करता है फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे, सुबह 6 बजे से टीचर हमारा शाम के 7 बजे तक एंगेज रहता है। हम कभी किसी से नहीं पूछने जाते कि हमारे टाइमिंग इतने ज्यादा क्यों है। जब हमारे स्कूल टीचर्स की बात आती है तो वहां पे हम चाहते हैं कि जो केमिस्ट्री टीचर या फिजिक्स के टीचर को इक्वलेंसी मिल रही है, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी मिले, और ये मिलेगी, क्योंकि बहुत लड़ाई के बाद ये कोर सब्जेक्ट में आया है। आप देखिए पॉलिसी प्लान पढ़ेंगे, उसमें 21 जगह स्पोर्ट्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और 14 जगह फिजिकल एजुकेशन का इस्तेमाल हुआ। पहली बार कोर सब्जेक्ट में आया है, और मैंने कहा कि बहुत जल्दी फिजिकल एजुकेशन जो है वो PCS एग्जाम के अंदर एक ऑप्शनल पेपर होगा। फिर लगातार लैंग्वेज की जो आप बात कर रहे थे, इसके अंदर पढ़िए, ये रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। हर जगह की जो भी लैंग्वेज होगी उसी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उस पर लिटरेचर भी तैयार हो रहा है, इस पर ऑलरेडी कमेटियों ने काम करना शुरू कर दिया है। रहा जो आप कह रहे थे कि जो अभी PhD स्कॉलर जो एजुकेशन के बोले थे, आपको बता दूं एक सिस्टम है B.Ed 4 years, B.Ped 4 years के अंदर एग्जिट सिस्टम बनाए गए। अगर बच्चे की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वो फर्स्ट ईयर पढ़ता है, वो उस साल के क्रेडिट लेके जा सकता है, प्री प्राइमरी स्कूल में जाके काम कर सकता है, थोड़ा पैसा हो जाए, वो 2 साल के बाद किसी भी जगह जाके एडमिशन ले सकता है, और वो क्रेडिट जो वो कैरी कर रहा है वो वहां जुड़ेंगे। ऐसे वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएगा तो उसको फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, फिर डिप्लोमा का होगा, फिर डिग्री होगा, और उसके बाद जाके वो इंटीग्रेटेड 1 year करके वो 5 years का मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी पूरा कर सकता है। उसके बाद रिसर्च में जा सकता है, और रिसर्च भी इस समय इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। इस समय जो ये पॉलिसी है ये सिर्फ टीचर सेंट्रिक नहीं है, टीचर्स पे एम्फेसिस है कि क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। इट्स बोथ वे, स्टूडेंट सेंट्रिक एज वेल एज टीचर सेंट्रिक, इट्स बोथ वे, और इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी मेरे सीनियर सर जो हैं वो इस बारे में It's my responsibility to wind up the session. There are several ideas and issues that have evolved during our discussion.
I'm sure that we have noted down, and we'll just make a summary of them and send it to the concerned agency. I would just like to conclude by saying one thing. Let us remove any doubt from our minds that teaching is not a profession. It is an established profession. And once you accept this, then we as teachers also must accept that we have to behave like professionals. A professional behavior demands certain minimums from you. Minimums of your conduct, minimums of your personality, minimums of your etiquette, minimums in your value system, minimums in your integrity, minimums of everything. That is the minimum. And that minimum for the teachers is also idealistic. Now, this is not happening. Therefore, there is a need to link the progression of teachers with those minimum standards that they must depict, demonstrate when they act as professionals in practice. Be it school level, be it the university level. वो मिनिमम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तो आपको करने पड़ेंगे और over a period of time the experience reveals that nothing in this direction has been done. We often compare our university system example, I can also quote school examples. We often compare our, or not compare, we often, there is a dictum, there is an announcement, there is an expectation. Q ranking, this ranking, at least some of our Indian universities must come amongst top 500, not to talk of top 100. And the benchmark is the Ivy League universities, Oxford and Cambridge. Here the jobs are the track and the professional expectations are so high. यहाँ हायर एडवांसमेंट में एपीआई करने में लोगों को एक्शन पैदा हो रहा है तो कैसे होगा? इस मैटर जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे. People who are self-motivated will continue to and will excel. Will become leaders. हमारे आप में से लीडर्स निकलते हैं, हमारे आप में से स्कॉलर निकलते हैं, हमारे आप में से ऐसे लोग भी हैं जो नेचर में भी पब्लिश कर रहे हैं और अपने प्ले में इंटरनेशनली कर रहे हैं. उनके लिए भी ऐसी सिस्टम, ऐसी सिस्टम है. लेकिन सवाल है कि हाउ मेनी आर दे? Even in a normal probability curve, plus 1 alpha, उतने देर होगा. अब सवाल ये है कि वो जो आपका जो एंटिटी है, in terms of competency, in terms of performance, वो कौन सी कट प्रोसेस में जरा आपको लिखिएगा ध्यान से. Whether it is subjective, predictive, or mesotic. When I say this, I'm talking in terms of the volume, the numbers. Now, how to bring in that majority which is non-performing to perform? Therefore, benchmarking and laying down of certain minimum professional standards is essential. From that point of view, this document is a very good beginning. Of course, one concern that has been expressed by each one of us, many of us rather, how would progression be assessed? I would quote here Kothari Commission's recommendation, major recommendation. He said, if you reform your assessment or examination system, everything is improved.
Assessment is the key. Assessment is the key. I am leaving this house with one question mark. Are we assessing students professionally? This is the end of my closure. Who is going to assess? It is we. Who goes and gives recognition to these B.Ed colleges? It is we. And you are talking of idealism. Now in this country, diversity, this and that. There's still students favoring, teachers favoring students on caste basis. They are blaring examples. Are we teachers? Are we acting as professionals? Thank you very much. अनाउंसमेंट है, आप जो छूट रहे हैं और उनको कोई फीडबैक देना है या जिन्होंने बात की थी वो प्लीज मैडम की मेल पे So thank you so much, the chairperson and all the panelists for the NPST session, for their brainstorming ideas and views, and the participants for discussing, for sharing their experience and views regarding that NPST. So definitely those authorities will take care of all those views and consideration and ideas and suggestion while incorporating or while drafting the policy for making that national professional standard for teachers. So thank you so much for your patience listening and actively participated in this discussion. So now all are requested to have a lunch, and then again requested to be there at sharp at 2:30 to start with the second open house session, or that is on NMM, National Mission for Mentoring. So thank you so much. Already invited. वहीं से